Jaya Vishnupad Paramahamsa Hari-katha Shishimad. His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jaya Vishnupad Paramahamsa Hari-katha Shishimad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Vrinda Ki. Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakun Radhakund Giri Govardhana Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Mayapur Navadvip Dham Ki. Shri Sheta Jagannath Puri Dham Ki. Ganga Mai Ki, Jamuna Mai Ki, Bhakti Devi Ki, Tulasi Maharani Ki, Shri Gauranitai Ki, Shri Krishna Balaram Ki, Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devis Ki, Shri Radha Gopinath Ki, Shri Radha Gopal Ju Ki, Shri Radha Madhava Ki, Premanam Sankirtan Jagya Ki, Gaura Premanande. All glories to the simple devotees. All glories to the simple devotees. All glories to the simple devotees. All glories to Shri Guru Shri Gauranga Mahaprabhu. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Govinda Swami. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami. Namaste Saraswati Devi Chani Vishesha Shunyavani Kachita Deshatani. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Gauranitai Ki, Srila Prabhupada Ki, Srila Govinda Swami Srila Gurudeva Ki, Samaveda Bhakta Vrinda Ki, Gaura Premanande. Hare Krishna. Welcome to the new devotees who have come to join us. स्वागत है नए भक्तों का जो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आए हैं. Where's this other devotee? He should be here. He came to here not to cook. वो यहाँ आए हैं कुकिंग करने के लिए नहीं. You can cook anytime. और दूसरे समय रसोई कर सकते But you could not hear every time. लेकिन हमेशा सुनने का मौका नहीं मिलता. So hearing more important. श्रवण ज़्यादा जरूरी है. If you hear nicely, then you'll cook nicely. अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आप अच्छे से रसोई कर सकते Because you'll be in nice consciousness. क्योंकि आप अच्छी चेतना में होंगे. Hopefully. उम्मीद है. And nice consciousness means also nice motivation. और अच्छी चेतना का मतलब है अच्छा उद्देश्य भी होगा. So without proper hearing and chanting, we could not be in right consciousness, not have the right pure spiritual motivation. बिना सही तरीके से श्रवण कीर्तन किए बिना हम सही चेतना में नहीं आ सकते, सही उद्देश्य में नहीं आ सकते सेवा को करने के. That's why Shravanam Kirtanam is most important aspect of devotional service. इसलिए श्रवण कीर्तनम भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है. That's why we came together. इसलिए हम एक साथ. Hare Krishna. Hare Krishna. So we've been talking about faith last few days. तो पिछले कुछ दिनों में हम श्रद्धा के बारे में बात कर रहे थे. And of course Krishna, he is Paramatma, super soul within the heart of every living entity. और अवश्य कृष्ण परमात्मा सभी जीवात्माओं के हृदय में स्थित है. Savasya Chaham Vriddhi Sanavishto Matashmrita Jnanam Aponam Cha. Krishna says, I'm in the heart of every living entity. From me comes knowledge and intelligence. कृष्ण कहते हैं मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में हूँ और मुझसे ज्ञान और बुद्धि आती है. And remembrance. और स्मरण शक्ति. If you want to remember. अगर मुझे स्मरण करना चाहते हैं. But if you want to forget, Krishna says, I'll also make you forget. लेकिन अगर हम भूलना चाहते हैं तो कृष्ण कहते हैं मैं आपको भुलवा भी दूंगा मुझे. So Prabhupada said, the only thing a soul can do is desire. प्रभुपाद कहते हैं आत्मा एकमात्र कार्य कर सकती है इच्छा प्रकट करना. Desiring spiritually or we're desiring materialistically. या तो हम भौतिक इच्छा करेंगे या आध्यात्मिक इच्छा करेंगे.
And based on our association, whether materialistic or spiritual, will determine what is our desire and what is the strength of our desire. तो हम जिस तरह का संग करेंगे ये आधारित करेगा हम आध्यात्मिक इच्छा प्राप्त करेंगे या भौतिक इच्छा। If we associate with Krishna, Krishna's devotees and hear about Krishna, then we'll develop purified consciousness and hopefully spiritual desire. अगर हम कृष्ण के भक्त के साथ संग करेंगे, उनसे श्रवण करेंगे तो हम अच्छी चेतना प्राप्त कर पाएंगे, सही चेतना प्राप्त कर If we associate with materialistic minded people, this asat sangha, then only will develop materialistic thoughts and materialistic desires. अगर हम भौतिकवादी लोगों के साथ संग करेंगे तो यह सत्संग है, तो हम भौतिक इच्छा प्राप्त करेंगे, भौतिक चेतना प्राप्त करेंगे। So Krishna simply fulfills everybody's desire, whether materialistically or spiritually. तो कृष्ण सरलता से किसी की इच्छा पूरी करते हैं, या वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। So it says that Krishna, he knows past, present and the future. कहते हैं कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। We cannot barely remember what happened yesterday, what to speak of past lifetime. हम तो मुश्किल से कल क्या हुआ उसको याद रख पाते हैं, तो पिछले जन्म का क्या कहना है। So we don't remember all of the desires that we had in previous lifetime. तो हमें उन सारी चीज़ों की स्मरण नहीं है जो हमारी इच्छाएं थी पिछले जन्म में। But those materialistic desires brought us again to take another materialistic birth. और यही भौतिक इच्छाओं की वजह से हमने पुनः ये भौतिक शरीर धारण किया है। In order to fulfill those materialistic desires. ताकि उन भौतिक इच्छाओं को हम फिर से पूरा कर सकें। So we may have forgotten what those desires are, but Krishna, he does not forget. तो हो सकता है हम भूल जाएं उन सारी भौतिक इच्छाओं को, लेकिन कृष्ण उन इच्छाओं को नहीं भूलते। So Krishna says when you're leaving your body, whatever you're desiring, whatever you're thinking about, that's what you're going to get in your next lifetime. तो कृष्ण बताते हैं जब अपना शरीर छोड़ रहे हो आप, उस समय जिस चीज़ का आप स्मरण करेंगे, जिस चीज़ जैसी इच्छा करेंगे, वैसा ही आपको जन्म We want to enjoy materialistically and materialistic bodily consciousness and relationship, then that desire you'll get in the next life. तो अगर आप भौतिक चेतना में भौतिक संबंधों का आनंद भोगना चाहते हैं तो ऐसा जन्म हमें अगले जन्म में मिलेगा। Krishna says, but if you desire me and thinking of me at the time of your passing, then your next life you'll come to me. और कृष्ण कहते हैं अगर आप मेरे प्रति इच्छा करेंगे, मेरे बारे में सोचेंगे तो अगले जन्म में आप मुझे प्राप्त करेंगे। So our thoughts and desires that we cultivate in our life, that will carry into the next life. तो जिस तरह के विचार, जिस तरह की इच्छा हम इस जीवन में प्रकट करेंगे, ऐसा ही हमें अगला जन्म आगे मिलेगा। So even though we may forget what our thoughts and desires were in previous life, Krishna did not forget. तो हो सकता है हम अपने विचार, अपनी इच्छाएं भूल जाएं पिछले जन्म में क्या थी, लेकिन कृष्ण उनको नहीं भूलते। So Krishna, as Paramatma Super Soul, he says, I give intelligence and faith how to pursue what your previous desire was. तो कृष्ण बताते हैं परमात्मा के रूप में मैं उनको वो सारी बुद्धि और स्मरण देता हूँ कैसे उन सारे भौतिक इच्छाओं को वो प्राप्त कर सकते हैं। So if you want to enjoy materialistically and worship materialistic people, I'll give you that intelligence and faith how to do like that. तो कृष्ण बताते हैं अगर आप भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, भौतिक चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आपको बुद्धि दूंगा कैसे आपको। If you want to worship the demigods for some materialistic benediction, I'll give you intelligence and faith how to do that. अगर आप किसी देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं किसी भौतिक लाभ के लिए, तो मैं आपको वो बुद्धि और श्रद्धा दूंगा कैसे आप उसको कर सकते हैं। If you want to merge into me and you want to become God, I'll give you intelligence and faith how to do that. अगर आप मुझ में विलीन होना चाहते हैं, स्वयं को भगवान महसूस करना चाहते हैं, मैं आपको बुद्धि दूंगा कैसे आप वो प्राप्त कर सकते हैं। And if you want to surrender and serve me in a mood of loving devotion, Krishna says, I'll give you real intelligence, spiritual intelligence and faith how to do that. लेकिन अगर आप मुझे शरणागत करना चाहते हैं, मेरी सेवा करना चाहते हैं प्रेम और स्नेह से, भक्ति भाव से, तो मैं आपको बुद्धि दूंगा कैसे आप वो प्राप्त कर सकते हैं। So simply our desire is determining, our present life and our future life. तो हमारी इच्छा निर्धारित करती है हमारा वर्तमान जीवन और हमारा भविष्य का जीवन। And the associations that we choose, whether it's sat or asat, will determine whether we're cultivating materialistic desire or spiritual desire. तो जिस तरह का हम संग कर रहे हैं, सत्संग या असत्संग, वो निर्धारित करेगा हमें भौतिक इच्छाएं प्राप्त होगी या आध्यात्मिक इच्छा। So if we have materialistic desire, then we're coming under Maya, coming under modes of material nature, Tama, Raja, Sattva gun. तो अगर हम भौतिक इच्छाएं हैं हमारे अंदर, तो हम माया के अंदर हैं, प्रकृति के गुणों के अंदर हैं, तमो, रजो और सतो गुण के अंदर। So that intelligence and faith coming from Krishna under modes of material nature will be tainted, it will be contaminated with some type of gross or subtle materialism.
इस तरह की बुद्धि और श्रद्धा जो हमें कृष्णा से मिल रही है प्रकृति के गुणों के अधीन, ये किसी तरह से गंदगी होगा, इसके अंदर भौतिक कलमश मिला होगा। And Krishna says, if you want to come to me and serve me in a mood of devotion, then you get the Shuddha Sattva, transcendental intelligence and faith, which is real Shraddha, real faith and intelligence from Krishna himself. और कृष्ण कहते हैं अगर आप मेरी सेवा करना चाहते हैं प्रेम और भक्ति भाव से, तो मैं आपको वो बुद्धि दूंगा, और ये बुद्धि शुद्ध सत्व के स्तर पे, दिव्य स्तर पे होगी। So if you ask anyone, regardless of their material or spiritual desires, everyone will think that I have faith and intelligence as to what is in my best interest, what I need to do, what I want to do. तो आप किसी को भी अगर पूछें आपकी भौतिक इच्छाएं के बारे में, तो कहेंगे हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरी पूरी श्रद्धा है, बुद्धि है, जो मैं करना चाहता हूँ उसमें मेरी ये मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ। Intelligence and faith may not be transcendental. लेकिन वो बुद्धि और श्रद्धा हो सकता है They may दिव्य ना not be pure. हो सकता है शुद्ध ना हो। That is a real Shraddha, real faith. वो असल श्रद्धा है। The other materialistic is some contamination, some deviation, therefore it's impure. और ये सारी भौतिक श्रद्धा इसमें कुछ न कुछ दूषण है, ये अशुद्ध है, इसीलिए उसके अंदर कुछ कमी है। But because we're very pride and false ego of our intelligence, we take whatever intelligence coming, that's absolute. Must think like that, must do like that. और हम इतने मिथ्या अहंकार और इतने दम्भ में हैं, हमारे अंदर जो भी बुद्धि आती है हम कहते हैं हाँ ये अवश्य परम सत्य है और हमें इसको मानना चाहिए, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। Whatever our faith is, we're taking that also as very absolute. और जो भी हमारी श्रद्धा है उसको हम परम सत्य मानते हैं। This is my faith, this is my realization, this is my intelligence, that is just as good. ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा साक्षात्कार है, ये परम सत्य के बराबर है। Even though Krishna says in Bhagavad Gita that intelligence, mind and senses is controlled by Maya under modes of material nature. यहाँ तक कि कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में वो श्रद्धा और बुद्धि माया से आ रही है, माया के प्रकृति के गुणों के अधीन दूषित है वो। So Krishna is using Maya, who has captured intelligence, mind and senses of conditioned soul. तो कृष्ण माया का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने बद्ध जीवात्मा के मन, बुद्धि और इंद्रियों को जकड़े रखा है, giving so-called intelligence and faith. और उनको नाम मात्र का बुद्धि और श्रद्धा दे रहे हैं। When Krishna is controlling the soul, then one's getting real Shraddha, real faith, real transcendental intelligence. जब कृष्ण आत्मा को नियंत्रण कर रहे होते हैं तो उसको दिव्य बुद्धि, दिव्य श्रद्धा प्राप्त होती है। So this has been our discussion the last couple of days for the new devotees who came. We're just catching you up a little bit. तो ये पिछले कई दिनों में हम इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा कर रहे थे जो नए भक्त आए हैं, ताकि हम उनको भी इस बात को समझा सकें, हम उनके लिए फिर से दोहरा रहे हैं। I found a really nice discussion from Srila Prabhupada where he's talking about this exact topic. और मुझे श्रील प्रभुपाद की एक चर्चा प्राप्त हुई जिसमें इसी विषय के ऊपर वो बात कर रहे थे। So I think it would be very interesting to add to our discussion. तो मुझे लगा कि बहुत रुचिकर होगा हम अपनी चर्चा के बीच इनको शामिल करें। And Srila Prabhupada is speaking in the room conversation in Hawaii, Honolulu. तो श्रील प्रभुपाद एक कमरे के बीच वार्तालाप में हवाई में होनोलुलु में बता रहे हैं। June 16, 1975. 16 जून 1975। And devotee is reading from the Shastra saying that under the influence of material desire, the entity is born. और भक्त एक शास्त्र से पढ़ रहे हैं कि भौतिक इच्छा की वजह से जीवात्मा का जन्म होता है। Sometimes as a demigod, कभी-कभी देवी देवता के रूप में, sometimes as a man, कभी मनुष्य के रूप में, sometimes as a beast, कभी जानवर के रूप में, as a bird, पक्षी के रूप में, as a worm, कृमि के रूप में, as an aquatic, कभी जलीय जीव के रूप में, as a saintly man, कभी साधु जैसे व्यक्ति के रूप में, as a bug. और इन सारी चीजों So according to our materialistic desire, Krishna is fashioning a particular type of body under particular modes of material nature. तो हमारे विशेष भौतिक इच्छा के आधार पे कृष्ण एक विशेष तरह के शरीर का निर्माण करते हैं प्रकृति के 3 गुणों के अधीन। Through 8,400,000 different species of life. 84 लाख योनियां का निर्माण करते हैं। And then Srila Prabhupada said, but these rascals, fools, they do not believe it. लेकिन श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये मूर्ख, ये बदमाश इसमें विश्वास नहीं करते हैं। They don't believe in transmigration of the soul. वो आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास नहीं करते हैं। Because they're uneducated. क्योंकि वो अनपढ़ हैं। And then one devotee says, no faith. और दूसरे एक भक्त ने कहा उनको कोई श्रद्धा नहीं। They have no faith. उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। And Srila Prabhupada says, the rascal may not have faith. और श्रील प्रभुपाद बताते हैं एक बदमाश के पास श्रद्धा नहीं हो सकती। We may have no faith
to become old man. You can have no faith that you're going to become an old man, but will you not still become an old man? हो सकता है आपको श्रद्धा नहीं हो कि आप एक बूढ़े व्यक्ति नहीं बनेंगे, लेकिन क्या यह सत्य है कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे? If you're a young man and you may believe your faith that no, I am not going to become an old man. आप अगर एक जवान व्यक्ति हैं, आप हो सकता है आपको ये श्रद्धा हो नहीं, मैं कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। Then who cares for your belief? लेकिन किसको फर्क पड़ता है आपके इस विश्वास से? Death will come and kick out your faith, your so-called faith. मृत्यु आएगी और आपके लात मार के निकाल देगी आपकी श्रद्धा को। So you are controlled under the modes of material nature, and that is a fact. तो आपको प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में रखा गया है और ये एक सत्य है। So if you are controlled under the modes of material nature, what is this faith nonsense? तो अगर आप प्रकृति के गुणों के अधीन हैं, तो ये आपका श्रद्धा क्या बकवास है? So Prabhupada is saying that this so-called faith intelligence under modes of material nature, Prabhupada is calling it a nonsense. तो ये जो नाम मात्र की श्रद्धा बुद्धि है, जो प्रकृति के गुणों के अधीन है, प्रभुपाद इसको बकवास बता रहे हैं। You may believe or not believe. आप विश्वास करें या ना विश्वास करें। That means nature will be controlled by your believing. क्या प्रकृति आपके विश्वास के आधार पर नियंत्रण And होती है? you're not believing. या आप जो जिसमें विश्वास नहीं करते उसके आधार पर कार्य करती है? Our believing or not believing, our faith or not belief, that's going to control the material nature. तो हमारा जो विश्वास है या हमारा जो विश्वास नहीं है, जो श्रद्धा है श्रद्धा नहीं है, क्या वो हमारे प्रकृति के नियंत्रण कर सकता है? You are a rascal. आप एक बदमाश हैं। You're a nonsense. आप एक बकवास हैं। Nature will act anyway. प्रकृति फिर भी कार्य करेगी। A child has faith that fire will not burn him, एक बच्चे को श्रद्धा होती है कि आग उसको जलाएगा नहीं, and he touches the fire. और फिर वो आग को छूता है। But will his faith save him from getting burned? लेकिन क्या उसकी श्रद्धा उसको बचा पाएगी आग में जलने से? So what is the value of that faith? तो क्या महत्व है उनकी श्रद्धा? He has no real faith because he's too simple. उनके पास कोई असल श्रद्धा नहीं है क्योंकि वो ज्यादा सरल है। And he's thinking that fire is as good as water. और वो सोच रहे हैं कि आग जल के समान है। So will that faith, will that save him? Will that save the child? लेकिन क्या ये श्रद्धा उस बच्चे को बचा पाएगी? Will that save him just because he's a child? His faith will save him just because he's a child? तो सिर्फ वो एक बच्चा है इस वजह से क्या उसकी श्रद्धा उसको बचा पाएगी जलने से? So this faith and that faith and no faith, this is all rascaldom. तो ये श्रद्धा वो श्रद्धा कोई श्रद्धा नहीं, ये सब पूरी तरह से बदमाशी है। It is all rascaldom. ये सब बदमाशी है। We believe, हम विश्वास करते हैं। we have no faith. हमें कोई श्रद्धा नहीं है। Who cares for your belief and your faith? किसको फर्क पड़ता है आपके विश्वास से आपका श्रद्धा से? You're a rascal. आप एक बदमाश You may हैं। not have faith or believe, आपको हो सकता है कोई श्रद्धा ना हो, कोई विश्वास ना हो, but that nature will act anyway. लेकिन ये प्रकृति फिर भी कार्य And करेगी that is a fact. और ये एक सत्य है। So this is a nice way of describing that so-called intelligence and faith is actually useless and nonsense because it's not reality. और ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि ये नाम मात्र की श्रद्धा और बुद्धि सत्य नहीं है और असल में पूरी तरह ये बकवास है। So disciple says, so it's a matter of education. तो एक शिष्य ने कहा ये एक शिक्षा का सवाल है। And Srila Prabhupada says, better education means to know how nature is working. और श्रील प्रभुपाद बताते हैं बेहतर शिक्षा का अर्थ है ये समझना कैसे प्रकृति कार्य करती है। Why do you believe in your faith and this and that? क्यों अपने आप विश्वास में भरोसा रखते हैं? So ये we're ऐसा speculating so many things, trying to use our intelligence, so-called experience. That speculation is very faulty. तो हम मनोधर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं उसके माध्यम से, लेकिन ये हमारा मनोधर्म त्रुटियों से भरा है। So-called intelligence develops a certain type of faith. इस नाम मात्र की बुद्धि से हमें एक विशेष प्रकार की श्रद्धा प्राप्त होती है। The Prabhupada said this is all nonsense. एक प्रभुपाद बताते हैं ये सब बकवास है। We believe, हम we विश्वास don't करते हैं, believe. हम विश्वास नहीं करते हैं। Who cares for your belief? किसको फर्क पड़ता है आपके विश्वास से? And who cares for your faith? किसको फर्क पड़ता है आपके श्रद्धा So से? obviously he's not talking about real Shraddha. तो अवश्य यहाँ पे असल श्रद्धा की He's बात नहीं talking है। about the so-called faith under the material modes of nature, which is all coming from Maya. That so-called intelligence and faith is all faulty. So who cares about that when you're talking about absolute truth? तो
तो यहाँ पर उस श्रद्धा नाम मात्र की श्रद्धा की बात हो रही है जो प्रकृति के गुणों के अधीन आता है, माया के नियंत्रण में होता है। ऐसी श्रद्धा की यहाँ बात हो रही है जिसका कोई महत्व नहीं। So there is no question of faith and belief. तो श्रद्धा या विश्वास का कोई सवाल ही नहीं होता। And disciple says it's a matter of education of the truth. तो एक शिष्य बताते हैं ये एक शिक्षण के परम सत्य के शिक्षा का सवाल है। Prabhupada said yes, they have no education. प्रभुपाद ने कहा उनके पास कोई शिक्षा And नहीं, that is a fact. और ये एक सत्य है। Therefore they say faith. इसलिए वो कहते हैं श्रद्धा, And they describe religion as faith. और वो धर्म को श्रद्धा के आधार पर परिभाषित करते हैं। Therefore the question of religion is insignificant. इसलिए धर्म का यहाँ पर कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। Just based on their feelings and their emotions and their so-called faith, then that doesn't describe what is real religion. तो जब धर्म को हम किसी भावनाओं, विचारों या अनुभूति के आधार पर नाम मात्र की श्रद्धा के आधार पर परिभाषित करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। Srila Prabhupada says because it's a kind of faith. श्रील प्रभुपाद बताते हैं क्योंकि किसी एक विशेष प्रकार का श्रद्धा है। A kind of faith means not real faith. एक प्रकार का श्रद्धा मतलब ये असल श्रद्धा नहीं है। So now modern advanced people, they say, you remain with your faith. तो आधुनिक सभ्य व्यक्ति अब ये कहते हैं आप अपनी श्रद्धा में रहिए, And I'll remain with my faith. और मैं अपनी श्रद्धा में रहूंगा, And she'll remain with her faith. और वो अपनी श्रद्धा में रहेंगी। Then everything is lost. तो सब कुछ खो जाएगा। So that so-called faith, that will not save you. तो इस तरह नाम मात्र का श्रद्धा आपको बचा नहीं पाएगा। If you have faith that you will not become an old man, अगर आपको श्रद्धा है कि आप एक बूढ़े व्यक्ति नहीं बनेंगे, and that is your faith, और अगर आपकी ये श्रद्धा है, nature will not act anyway, तो प्रकृति उसके आधार पर कार्य नहीं करेगी, therefore you must become old. और आपको बूढ़ा होना ही पड़ेगा। So what is the value of this type of so-called faith or speculation, intelligence? तो क्या महत्व है इस तरह की श्रद्धा का, इस तरह की बुद्धि का, इस तरह के मनोधर्म का? Prabhupada said, but there's another faith, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं एक दूसरा श्रद्धा भी है, and that is real faith, और वो है असल श्रद्धा, transcendental faith. दिव्य श्रद्धा। That's a real shraddha. वो असल श्रद्धा है। That faith is the beginning. वो श्रद्धा शुरुआत है। But not everyone has that kind of faith. लेकिन सभी के पास इस प्रकार की श्रद्धा नहीं है। That if you have faith in the right thing, then that is good. और अगर आपको अच्छी सही चीज में श्रद्धा है तो वो So अच्छी if your है। faith and intelligence is based on absolute truth, then that faith and intelligence is very good. तो अगर आपका श्रद्धा और बुद्धि परम सत्य के आधार पे है तो ये बुद्धि और श्रद्धा अच्छी है। But if your so-called intelligence and faith is in the wrong thing, लेकिन अगर आपका नाम मात्र की बुद्धि और श्रद्धा गलत चीज पे है then that will not be good. तो वो अच्छा नहीं है। So real faith is good. तो असल श्रद्धा अच्छा है। Without faith, we cannot make any progress. बिना श्रद्धा के हम कोई उन्नति नहीं कर सकते। Suppose I'm going to India and I'm getting on an airplane. मान लीजिए कि मैं भारत जा रहा हूँ और मैं विमान में चढ़ने जा रहा हूँ। So I have got faith that this airplane will carry me to India. तो मेरी ये श्रद्धा है कि ये विमान मुझे भारत लेके जाने वाला है। So without this faith, we cannot get on the airplane. तो बिना इस श्रद्धा के हम विमान में नहीं चढ़ेंगे। Otherwise, you'll just remain there because you have no faith that it will bring you to India. वरना आप बस वहीं खड़े रहेंगे क्योंकि आपको श्रद्धा नहीं है कि ये विमान आपको भारत लेके जाएगा या नहीं। If you go to a barber अगर आप एक नाई के पास जाएंगे and you want him to shave you using a razor, अगर आप चाहते हैं वो आपका सेव करे और आपको if you have faith that this man will not cut my throat, लेकिन अगर आपको ये श्रद्धा है ये व्यक्ति मेरा गला नहीं काटेगा, he'll just simply shave me. ये बस सरलता से सेव करेगा। So unless you have got this faith, how can you be certain of the result? तो अगर आपको ये श्रद्धा नहीं है तो आप फलों के ऊपर कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं? So faith is required. तो श्रद्धा जरूरी है। In every action that we take, we must have faith. हर एक कार्य हम जो करते हैं उसमें हमारी कुछ श्रद्धा जरूरी है। So for making advancement in spiritual understanding, you must have faith, real faith. तो आध्यात्मिक समझ को बढ़ाने के लिए आपको अवश्य श्रद्धा की जरूरत है। And Krishna says, I'll give you intelligence and faith how to come to me, how you can know me and come to me. और कृष्ण बताते हैं मैं आपको बुद्धि और श्रद्धा दूंगा, कैसे आप मुझे जान सकते हैं, कैसे आप मुझ तक आ सकते हैं। If you have real faith, then it will work. अगर आपके पास असल श्रद्धा है तो ये काम करेगी।
If your faith is wrong, then it will not work. लेकिन अगर आपका श्रद्धा गलत है तो ये काम नहीं करेगा। So if the intelligence and faith is coming from Maya, through the intelligence, mind and senses, then how are we going to come and understand how to proceed on the path of absolute truth? तो अगर हमारी बुद्धि और श्रद्धा गलत स्रोत से आ रही है, माया से, मन, बुद्धि और हमारी इंद्रियों से आ रही है, तो कैसे हम परम सत्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे? So if the faith is right, then it will work. If your faith is wrong, then it will not work. तो अगर आपकी श्रद्धा सही है तो ये काम करेगा, अगर आपकी श्रद्धा गलत है तो ये काम नहीं करेगा। If you have faith in Krishna, that is right. अगर आपकी श्रद्धा कृष्णा में है तो ये सही है। But if you have faith to listen to Lenin, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है कि आप लेनिन or को some सुनना चाहते हैं similar rascal, या ऐसे ही किसी एक जैसे बदमाश को सुनना then चाहते that हैं is wrong. तो ये गलत है। And Prabhupada says, I have raised this question with this Professor Kotovsky in Moscow. प्रभुपाद ने बताया, मैंने प्रोफेसर कोटोवस्की के साथ मॉस्को में उनसे ये सवाल पूछा, Where is the difference between your philosophy and our philosophy? कौन सा अंतर है आपके सिद्धांत में और हमारे सिद्धांत में? You are keeping your faith on certain authority, आप अपनी श्रद्धा रख रहे हैं किसी विशेष अधिकारियों में and we are keeping our faith on a certain authority. और हम अपनी श्रद्धा रख रहे हैं किसी विशेष अधिकारी में। So your communism is dependent on your faith in Lenin, तो आपका साम्यवाद आधारित है आपकी श्रद्धा लेनिन के ऊपर, and our Krishna consciousness is depending on putting our faith on Krishna. और हमारा कृष्ण भावनामृत आधारित है अपनी श्रद्धा रखना कृष्णा के ऊपर। So the basic principle is the same, तो मूलभूत सिद्धांत दोनों में एक है, because you have to keep your faith on somebody. क्योंकि आपको अपनी श्रद्धा किसी के ऊपर रखनी ही है। So from philosophical point of view, there's no difference, तो सैद्धांतिक रूप से देखें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, because it's all the same thing. क्योंकि दोनों एक ही चीज है। The only difference is where are we putting our faith. अंतर सिर्फ यही है कि हम अपनी श्रद्धा कहाँ रख रहे हैं। You're keeping your faith on Lenin, आप अपनी श्रद्धा लेनिन में रख रहे and हैं I'm keeping my faith on Krishna. और मैं अपनी श्रद्धा कृष्णा में रख रहा हूँ। And now we then have to judge whether Lenin is good or Krishna is good. और अब हमें यह फैसला करना है कि लेनिन अच्छे हैं या कृष्णा अच्छे हैं, But the principle is the same. लेकिन सिद्धांत एक ही है। You cannot go without any leader, a guru. आप बिना किसी नेता के, बिना किसी गुरु के आगे नहीं बढ़ सकते। Similarly, we cannot also go without any guru. उसी तरह हम भी किसी गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। If the guru is bona fide, then I am benefited. अगर गुरु प्रमाणिक है तो मुझे लाभ होगा। If the guru is a rascal, then I am not. तो अगर गुरु बदमाश है तो मुझे कोई फायदा नहीं। Everyone will accept some leader. सभी कोई किसी न किसी नेता को चुनेंगे। This is a fact. ये एक सत्य है। So we have to keep faith on somebody. तो हमें अपनी श्रद्धा किसी में रखनी होगी। Prabhupada said, just like a child sleeps on the lap of his mother, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है। every child has got that faith in their mother. हर एक बच्चे को श्रद्धा होती है अपनी माँ के ऊपर। If the mother is a demon, sinister, and kills the child, अगर माँ एक असुर है, राक्षसी है, तो बच्चे को मार देती है, then he has no other shelter. तो उसके पास कोई और आश्रय नहीं है। So faith, that is the beginning, that is all right. तो श्रद्धा ये शुरुआत में जरूरी है, ये अच्छी है, Because everyone's putting some faith. क्योंकि हर कोई अपनी श्रद्धा रख रहे हैं किसी It's में। where is the faith and intelligence coming from, तो सवाल ये है कि वो बुद्धि श्रद्धा कहाँ से आ रही है and where are we applying that intelligence and faith? और कहाँ हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं श्रद्धा और बुद्धि का। If you keep your faith on perfect, then you will become perfect. अगर आप अपनी श्रद्धा पूर्ण में रखेंगे तो आप भी पूर्ण बन जाएंगे। So that Shuddha Sattva, transcendental intelligence and faith, that's perfect, ultimately coming from Krishna. तो ये शुद्ध सत्व स्तर की श्रद्धा, दिव्य स्तर की श्रद्धा, ये कृष्णा से आ रही है। But if you keep your faith on that which is imperfect, लेकिन अगर आप अपनी श्रद्धा उसमें रखेंगे जो अपूर्ण है, all of that intelligence, mind and senses, that so-called intelligence and faith coming from Maya, it's all tainted, it's all contaminated, it's all imperfect. वो नाम मात्र की श्रद्धा और बुद्धि जो आपको आ रही है माया के अंदर है और ये दूषित है और कलमश से भरी है, It's all asat. असत है, Then you will also become imperfect. तो आप भी अपूर्ण बन जाएंगे। But the process is the same. लेकिन प्रक्रिया बिल्कुल वही है।
So Prabhupada said that I inquired from the communist leaders. प्रभुपाद ने कहा ये मैंने जिज्ञासा की साम्यवादी नेताओं से। What is the difference of the process? There's no difference in the process. प्रक्रिया में क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं है दोनों प्रक्रिया। Now, whether we should follow Krishna or whether we should follow Lenin, that depends on my choice. अब हम कृष्णा का पालन करेंगे या हम लेनिन का पालन करेंगे, ये हमारी चुनाव के ऊपर आधारित है। But the process and the philosophy is the same. लेकिन प्रक्रिया और सिद्धांत दोनों एक है। And then Prabhupada said then that professor, he could not answer the question. प्रभुपाद ने बताया फिर वो उस प्रोफेसर ने उस सवाल का वो जवाब नहीं दे पाया। And then he became a little bit serious. और फिर वो थोड़े गंभीर हो गए। And then he became very respectful. और फिर वो बहुत आदर सम्माननीय हो गए। Because Prabhupada asked such a question that this big professor, he could not answer the question properly. क्योंकि प्रभुपाद ने उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जो इतने बड़े प्रोफेसर उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। So he seemed like a little simple, he became a little respectful and humbled out. तो ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े सरल हो गए, थोड़े सम्मान देने वाले हो गए और थोड़े विनम्र हो गए। So disciple says to Srila Prabhupada, I asked a similar question to a leader of one of the schools here. तो एक शिष्य ने पूछा कि मैंने भी एक स्कूल के शिक्षक से मैंने ऐसा एक सवाल पूछा। And the principal said, we can't let this Krishna consciousness philosophy into the schools. और उस शिक्षक ने कहा कि हम ये कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत स्कूल में नहीं सिखा सकते लोगों को। You can't hear? Hare Krishna. We can't let this into the schools because it's a type of faith and worship. हम इसको स्कूल में नहीं सिखा सकते क्योंकि एक तरह की श्रद्धा है, एक तरह का पूजा है ये। So they're saying you can't preach Krishna consciousness in the school because it's dealing with the faith and worship. तो कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत को हम स्कूल में नहीं सिखा सकते क्योंकि ये श्रद्धा और अर्चना के ऊपर आधारित है। A disciple of Prabhupada saying, I was explaining to them, actually you also have faith. और श्रील प्रभुपाद किसी से उनको बताया कि मैंने उनको बताने का प्रयास किया कि असल में आप भी किसी न किसी को श्रद्धा रखते हैं। Everybody has some faith and worship something, someone. सभी को किसी न किसी चीज में श्रद्धा है, किसी की पूजा करते हैं, किसी व्यक्ति की पूजा अवश्य करते हैं। You are having faith in material objects. अब हो सकता है श्रद्धा हो भौतिक वस्तुओं and में materialistic life, और भौतिक जीवन में, that will make you happy. कि वो आपको सुखी बना सकता है। You're taking shelter in materialistic objects. आप भौतिक वस्तुओं के ऊपर आश्रय ले रहे हैं। You're worshiping materialistic persons and materialistic things. आप भौतिकतावादी लोगों की और भौतिकतावादी चीजों की पूजा कर रहे हैं। You're bowing down to material things, material life. आप झुक रहे हैं भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक जीवन के प्रति। So many ways you're also worshiping. तो बहुत तरीके से आप भी पूजा कर रहे हैं। And you're also having faith in matter. और आपको भी श्रद्धा है जीव वस्तुओं में। So again, same faith and intelligence is there, worship is there. तो फिर से श्रद्धा बुद्धि है वहाँ, पूजा हो रही है वहाँ भी। But is it transcendental? Is it spiritual? Or is it materialistic under modes of material nature? तो ये दिव्य है, आध्यात्मिक है या भौतिक है, प्रकृति के गुणों के अधीन है। Prabhupada says one is illusory and the other is a fact. प्रभुपाद बताते हैं एक जो है बस दिखावटी है और दूसरा असत सत्य है। Krishna is a fact. कृष्णा एक सत्य है। It's science. विज्ञान है। And the matter, this is illusion. और वस्तुएं मोह है। That is the difference. ये अंतर है। One is perfect, other is imperfect. एक पूर्ण है, दूसरा अपूर्ण है। So Krishna is a fact because the mango is produced by Krishna. क्योंकि कृष्णा एक सत्य है क्योंकि आम कृष्ण के द्वारा बनाया गया है। Not by your materialistic scientists. आपके भौतिक वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया आम को। Therefore Krishna is a fact. इसलिए कृष्णा एक सत्य है। And you're talking and speculating is simply an illusion. और आप जो बातें कर रहे हैं और आप मनोधर्म कर रहे हैं ये सब मोह है। And there's only so-called faith. और ये बस नाम मात्र की श्रद्धा है। That cannot help ये आपकी मदद नहीं करेगी anyone. किसी की भी नहीं। So this is a very nice kind of further description about the difference between what is a fact, what is scientific, and what is speculative and illusory. तो यहाँ बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से बताया गया है क्या वैज्ञानिक सत्य है और क्या मोह है। One faith
intelligence is perfect, the other so-called faith and intelligence, which is tainted and contaminated by Maya, Prabhupada's calling it no faith and intelligence, it's just rascaldom. और जो असल बुद्धि श्रद्धा है वो पूर्ण है, और जो नाम मात्र की बुद्धि श्रद्धा है वो भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, दूषित है, और ये बकवास है पूरी तरह से। Who cares for your belief and your faith? किसको फर्क पड़ता है आपके विश्वास में, आपकी श्रद्धा में? So we're very much whatever we think and whatever we believe and whatever is our faith, we're taking it as absolute. तो जो भी हम सोचते हैं, जिन भी चीजों में हम विश्वास करते हैं, जिन भी चीजों में हमारी श्रद्धा है, हम सोचते हैं ये परम सत्य है। And that's why we're always arguing with everybody. और इसलिए हम हमेशा सभी के साथ बहस करते हैं। Because we want to establish ourselves and our understanding, our intelligence and faith. क्योंकि हम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारी श्रद्धा को। And because of pride, false ego, we cannot understand that it's a faulty intelligence and faith. और मिथ्या अहंकार और दंभ में हम ये नहीं समझ पाते हैं कि त्रुटिपूर्ण बुद्धि और श्रद्धा हमें मिली है। This is the problem. ये समस्या है। So Krishna says those who are bewildered by their false ego, they're thinking they're doing everything. जो कृष्ण बताते हैं जो अपने मिथ्या अहंकार से भ्रमित हैं, वो सोचते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। Whatever we're thinking, whatever we're planning, whatever we're doing, we're thinking under false ego, we're doing. जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम योजना बना रहे हैं, मिथ्या अहंकार में हम सोचते हैं ये हम कर रहे हैं। But Krishna says actually that intelligence and faith, that activity, I'm doing. लेकिन कृष्ण बताते हैं ये बुद्धि और श्रद्धा वो कार्य मैं कर रहा हूँ। The conditioned soul and the material nature, because their intelligence and faith is faulty, they think no, I'm doing. और बद्ध जीवात्मा जो भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है और मिथ्या अहंकार में है, वो सोचता है नहीं मैं कर रहा हूँ ये चीज़। So what is the value of that type of intelligence and faith? तो क्या महत्व है इस तरह की बुद्धि और श्रद्धा? What is that intelligence and faith which makes us forget Krishna's position and our position? वो किस तरह की बुद्धि और श्रद्धा है जो हमारी स्थिति को और कृष्ण की स्थिति को हमसे भुला देता है? Prabhupada says we're setting up as competitor to Krishna. प्रभुपाद बताते हैं हम कृष्ण के साथ अपने आप प्रतियोगिता Why करते is he the enjoyer? हैं। मैं आनंद। Why is Krishna the proprietor? क्यों कृष्ण सभी चीजों के मालिक हैं? Why is Krishna the supreme controller? क्यों कृष्ण परम नियंत्रण करता है? How is it Krishna is everybody's best friend? कैसे कृष्ण सभी के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं? Right? So we're competing with Krishna. तो हम कृष्ण के साथ प्रतियोगिता करते हैं। So what is that intelligence and faith if it makes us not to surrender to Krishna but to actually compete with Krishna? तो ये किस तरह की बुद्धि और श्रद्धा है जो हमें कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं कर पा रही बल्कि कृष्ण के साथ प्रतियोगिता कर रहे with हैं? Krishna. हम कृष्ण के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं। That means it's a faulty, nonsensical, इसका मतलब त्रुटियों से भरा है, बकवास, rascaldom, Prabhupada says. बदमाशी है, प्रभुपाद कहते हैं। But we're so proud of our intelligence and faith and our understanding. हमें बहुत ज़्यादा गर्व है अपनी बुद्धि और श्रद्धा में, हम अपनी समझ में। And we're arguing and defending and trying to always establish ourselves and our so-called intelligence and faith and plan. तो हम हमेशा बहस कर रहे हैं और अपने आप की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जिस तरह की बुद्धि श्रद्धा प्राप्त हो रही, जो समझ प्राप्त हो रही, उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। And because we feel so strong about it, और क्योंकि हम इसमें बहुत मजबूती से then we विश्वास think, करते no, this is definitely coming from Krishna. हैं, कहते हैं हाँ ये अवश्य कृष्णा से आ रहा है। So we've been talking last couple of days that really the first thing is find out first what Krishna wants you to do. इसलिए हम पिछले कई चर्चा में हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि सबसे पहले कृष्णा मुझसे क्या चाहते हैं। What is Krishna's intention or Krishna's instructions towards us? क्या कृष्णा के निर्देश है, क्या कृष्णा के मेरे प्रति निर्देश है? And then we can understand absolutely with intelligence and faith what Krishna wants us to do. तब हमें पूर्ण रूप से पता चल सकता है, पूरी बुद्धि श्रद्धा मिल सकती है कृष्णा हमसे क्या चाहते हैं। We're not going to speculate our way with imperfect mind and senses to understand what Krishna intends for us. हम अपने मनोधर्म के माध्यम से, अपूर्ण इंद्रियों और मन के माध्यम से ये पता नहीं लगा सकते कृष्णा हमसे क्या चाहते हैं। Rather, we should do submissive oral reception, and Krishna says, "Touch Shrinu, just hear from me directly and indirectly through parampara." और कृष्ण बताते हैं इसके बजाय तो विनीत भाव से श्रवण करो, तत्श्रेणु करो परंपरा में सीधे तरीके से या परंपरा के माध्यम। I'll give you intelligence how you can come to me.
मैं आपको बुद्धि दूंगा कैसे आप मुझ तक आ सकते हैं, how you can know me, कैसे आप मुझे जान how सकते you हैं, can serve me properly. कैसे आप मेरी सही तरीके से सेवा Only कर सकते Krishna can say that. हैं। सिर्फ कृष्णा ये बता सकते हैं। We cannot speculate our way to that answer. हम अपना मनोधर्म करके इस उत्तर को प्राप्त नहीं कर We सकते। simply have to humbly ask Krishna. हमें सरलता से, विनम्रता से कृष्णा को Then it पूछना is up होगा। to Krishna to give intelligence and faith how we should do it. और कृष्णा के ऊपर है वो कैसे हमें बुद्धि और श्रद्धा देंगे, कैसे हम उसे कर पाएंगे। And any thought, emotion, feeling, anything that comes to us, we can measure that against what Krishna has previously told us. और जो भी उसके बाद हमें विचार आएंगे, भावनाएं आएंगे, अनुभूति आएंगे, हम उसको तुलना कर पाएंगे कि कृष्णा ने हमें पहले क्या चीजें करने के लिए कही है। So if Krishna says, okay, I want you to cook in the kitchen, तो अगर कृष्ण ने कहा है मैं आप चाहता हूँ कि आप किचन में रसोई करें, रसोई घर में, and then you say, well, I want to worship the deities. लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं विग्रह की पूजा करना चाहता हूँ, So I had this thought तो मुझे ये विचार है ऐसा that I should be a pujari. कि मुझे पुजारी बनना चाहिए। And I don't know if it's coming from Krishna, whether that's coming from Maya. और मुझे नहीं पता ये कृष्णा से आ रहा है या माया से आ रहा है। But Krishna already told you that you should just cook for me. लेकिन कृष्णा ने आपको पहले बता दिया है कि आपको मेरे लिए रसोई करना है। So some thought comes, or some suggestion comes, or some feeling or emotion or liking, whatever, if it's not what Krishna asked you to do, then why will you consider that to come from Krishna? तो जो भी उसके बाद आपके विचार आ रही है, अनुभूति आ रही है, भावना आ रही है, कोई सुझाव दे रहे हैं, आपको जो चीज़ें पसंद आ रही है, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये कृष्ण आपसे चाहते हैं, जबकि कृष्ण ने पहले ही आपको बता दिया आपको रसोई करना है। Then you can kick out mental speculation. तब आप इससे मनोधर्म को लात मार सकते हैं। If you already know up front what Krishna wants you to do. अगर आपको पहले ही पता चल चुका है कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं, then you can understand it. So if Krishna tells you this is your seva, he gives seva to you through the spiritual master. अगर कृष्ण ने आपको बताया ये आपकी सेवा है, कृष्ण ने आपको सेवा दी है आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से, then any intelligence, faith or inspiration that comes towards executing your seva, then you can say, oh, this is in line with what Krishna has asked me to do. तो जो भी बुद्धि, श्रद्धा, प्रेरणा आपको मिल रही है आपकी सेवा को करने के प्रति, तब आप समझ सकते हैं कि मुझे ये दिशा निर्देशन प्राप्त हो रहा है कृष्ण से इस सेवा को सही तरीके से पूरा करने के लिए। How you can do your service in the best way possible. कैसे अपनी सेवा सबसे श्रेष्ठ तरीके से कर पाएंगे। But if your feeling and emotion, what's coming through your head has nothing to do with what Krishna has asked you to do. लेकिन आपको जो भी भावनाएं, जो विचार, जो अनुभूति आ रही है उसको कोई लेना देना नहीं है जो कृष्ण आपसे करवाना चाहते हैं। And instead you're concocting some other idea and plan. और उसके अलावा कुछ बनावट कर रहे हैं, कुछ नई तरह का योजना बना रहे हैं। Then you'll know, okay, this did not come from Guru Krishna. तब आप समझ पाएंगे ये गुरु कृष्ण से नहीं आ रहा। So why should I meditate on it? Why should I speculate? Why should I make a plan for that? तो क्यों मुझे उस पर ध्यान लगाना चाहिए, क्यों मुझे उसके बारे में विचार करना चाहिए उस योजना के प्रति। So if Krishna doesn't tell you up front, inside and outside through the Guru, how can you measure any thought, feeling, emotion, intelligence that comes, whether that's coming from Krishna or whether that's coming from Maya? तो अगर कृष्ण ने आपको पहले से ही नहीं बता कर रखा है कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, क्या नहीं करवाना चाहते हैं, तो जो भी आपके बुद्धि में या मन में जो भी विचार आएगा, जो भी योजना आएगा, जो ख्याल आएगा, कैसे पता चलेगा वो कृष्ण से आ रहा है या नहीं। Just like our friend, right? He's worshipping Tota Gopinath. जैसे हमारे एक मित्र हैं, वो टोटा गोपीनाथ की पूजा कर रहे हैं। And I just asked, did Krishna told you? He gave you that instruction that you should do like that? और मैंने उनको पूछा क्या कृष्ण ने आपको ये निर्देश दिया ये सेवा करने के लिए आपसे? So it looks very spiritual. देखने में बहुत आध्यात्मिक लग रहा है। But is that really what Krishna asking you to do? लेकिन क्या वो असल में आपसे कृष्ण आपसे चाहते हैं? So that's when it gets very, very tricky because it seems like a spiritual thing, right? A spiritual service. तब ये हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पता लगा पाना क्योंकि दोनों बहुत आध्यात्मिक लगते हैं देखने में एक जैसे। Oh, I got this inspiration. I should worship Tota Gopinath. तो मुझे ये प्रेरणा मिल रही है कि मुझे टोटा गोपीनाथ की पूजा करनी चाहिए। And what if Krishna telling Radha Gopinath and Bhubaneswar saying, "I want you to worship me as Radha Gopinath and Bhubaneswar"? और कैसा होगा अगर राधा गोपीनाथ जो भुवनेश्वर के वो उनका आदेश दे कि मैं आपको चाहता हूँ राधा गोपीनाथ की पूजा करें भुवनेश्वर में। Same personality. एक ही व्यक्तित्व है। But what does Krishna prefer?
लेकिन कृष्णा किसको पहले प्राथमिकता देते हैं? So that's why this is exacting science. और इसीलिए इसको विशेष विज्ञान कहते हैं। If we want to exactly know, Krishna will exactly tell you. अगर हम विशेष तरीके से जानना चाहते हैं निश्चित रूप से, तो कृष्णा हमें निश्चित रूप से बताएंगे। Guru Shastra Atmarupa. गुरु शास्त्र आत्मरूप है। Inside Paramatma Chaitya Guru, Krishna Adi Guru, he'll give you intelligence. भीतर से परमात्मा आदि गुरु चैत्य गुरु आपको बुद्धि देंगे। And he'll point us to the right person to accept as Guru, bona fide Guru. और हमें दिशा निर्देशित करेंगे सही व्यक्ति के प्रति जिसके हम अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। Mercy of Krishna, one gets such a Guru. कृष्ण की कृपा से किसी को ऐसे गुरु प्राप्त होते By हैं। the mercy of that Guru, then he helps us to understand and how to qualify ourselves to get Krishna, to please Krishna. और उस गुरु की कृपा से हमें सही समझ प्राप्त होती है। उनकी कृपा से हम योग्य बन पाते हैं कैसे हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते Two mercies are required. हैं। तो दो कृपा की जरूरत है, Otherwise, how do you do bhajana kriya? वरना कैसे आप भजन क्रिया करेंगे? Bhajana kriya means the instructions of Krishna through the Guru. That's how you know what your bhajana kriya is. भजन क्रिया का अर्थ है कृष्ण का जो निर्देश आपको गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वरना कैसे आपको पता चलेगा आपका क्या निर्देश है, भजन क्रिया है आपके लिए। Prabhupada said it's not that you just do anything and say, oh Krishna, that was for you. प्रभुपाद बताते हैं आप कुछ भी मनमाने ढंग से नहीं कर सकते और अंत में कहेंगे कृष्णा ये मैंने आपके लिए किया। Prabhupada said that's not in the line of pure devotional service. प्रभुपाद बताते हैं यह शुद्ध भक्ति का मार्ग नहीं है। Arjuna, Krishna wanted him to be a fighter, a warrior, Kshatriya. कृष्ण अर्जुन के लिए चाहते थे वो योद्धा की तरह, क्षत्रिय की तरह युद्ध करे। But Prabhupada said Arjuna was skillfully trying to avoid fighting. लेकिन प्रभुपाद बताते हैं अर्जुन बहुत कौशलता से युद्ध से बचना चाह रहे हैं। So he was trying to act like a Brahman renunciant. तो ब्राह्मण त्यागी के जैसे बनना चाहते थे। So he'll just go to the forest and meditate on the Lord. तो वो जंगल में जाके बस भगवान का ध्यान करेंगे। So what is more spiritual than that? तो उससे ज्यादा क्या आध्यात्मिक हो सकता है? But for him, it was acting as a Kshatriya. लेकिन उनके लिए निर्देश क्षत्रिय की तरह युद्ध करना था। So that meditating as a Brahman renunciant is actually adharma. तो इस तरह का ध्यान करना ब्राह्मण त्यागी के रूप में ये असल में अधर्म था। It's abhakti, not bhakti. ये अभक्ति है, भक्ति नहीं। And killing and fighting as a soldier according to Krishna's desire for Krishna's pleasure, that is dharma. और हत्या करना कृष्ण की इच्छा के आधार पे वध करना, युद्ध करना, ये धर्म है। That is sanatan dharma. वो सनातन धर्म है, That is bhakti. वो भक्ति है। So one must receive the instruction from Krishna. तो किसी को अवश्य निर्देश प्राप्त करना होगा कृष्ण। Otherwise, how can you trust any so-called intelligence, faith, emotion, feeling that will come to you? How will you know whether that's coming from Krishna or whether that's coming from Maya? मतलब जो भी बुद्धि, श्रद्धा, भावनाएं, विचार, ख्याल, योजना आपको मिल रही है, कैसे आपको पता चलेगा वो कृष्णा से आ रही है या माया से? What will you measure it against? आप किससे उसकी तुलना कर पाएंगे? That's how you can know. इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। So if you know what Krishna wants you to do through the instructions of the spiritual master, then just do that thing. अगर आपको पता है कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं, कृष्ण ने आपको निर्देश दिए हैं प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, तो बस उसे वही आपको करना चाहिए। Guru gives general instructions and specific instructions. गुरु आपको सामान्य निर्देश और विशेष निर्देश देते हैं। And do for the pleasure of Guru and Krishna. और इसे गुरु कृष्ण की प्रसन्नता Then you get their mercy. ताकि हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। Then everything is possible. तो सभी कुछ संभव है। Krishna says, better you do your own service imperfectly कृष्ण कहते हैं बेहतर होगा आप अपनी सेवा करें, हो सकता है आप उसको गलत तरीके से करें, than someone else's service perfectly. यानी कि आप दूसरे की सेवा करने का प्रयास करें, हो सकता है आप उसको बिल्कुल सही तरीके से करें। That means we must know 100% sure what does Krishna want us to do. इसलिए हमें पूरे 100% सुनिश्चित होना चाहिए कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं। Otherwise we cannot be free from bodily conception and mental speculation. वरना हम इस शारीरिक चेतना से, मानसिक मनोधर्म से बाहर नहीं आ Maybe सकते। this, maybe that, हो सकता है ये, हो सकता है maybe वो, here, maybe हो there, सकता है यहाँ, हो सकता है maybe वहाँ। married man, maybe not married हो man. सकता है मुझे विवाह करना चाहिए, हो सकता है विवाह नहीं करना चाहिए। How you come to any conclusion? कैसे आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे? Then we're acting as own guru. तो हम खुद के गुरु के रूप में फिर कार्य करते हैं। Well, I'll just pick something and I'll offer to Krishna. तो मैं कुछ भी चुनूंगा और उसको कृष्ण को अर्पण करूंगा। But isn't the point, will Krishna accept your offering? तो क्या ये महत्वपूर्ण बात नहीं है कि कृष्ण आपके अर्पण को स्वीकार If करें? we don't know what Krishna wants us to do, then
how we can do for him for his pleasure, अगर हमें पता नहीं है कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे उनकी प्रसन्नता के लिए? then why we should think whatever we do that Krishna is just accepting that work? तो कैसे हम सोच सकते हैं हम जो भी कार्य कर रहे हैं कृष्णा उस हमारे कार्य को स्वीकार कर रहे हैं? Do you have a good question for me today? क्या आपके पास कोई अच्छा सवाल है आज मेरे लिए? Anything? Yeah? What's your question today? आपका क्या सवाल है आज का? Guruji, one question. You choose a guru. What is the criteria for a new devotee? What is the mandatory for a new devotee choosing a guru? What is it? It says, what's the qualification for a new person to get a bona fide guru? Yeah. Prabhupada says sincerity and seriousness to want to surrender to Krishna. तो प्रभु का सवाल है कि क्या निम्नतम योग्यता होनी चाहिए किसी नए भक्त के पास कि वो प्रमाणिक गुरु को चुन सके? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, एक निष्ठता और गंभीरता कृष्ण को शरणागत करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए। A bona fide guru is external manifestation of Krishna. अगर प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु कृष्ण का बाह्य प्रकट रूप है, then he's capable, Krishna uses him to tell us what Krishna wants us to do. तो कृष्ण उनका इस्तेमाल करते हैं हमें ये बताने के लिए कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। If we don't want to hear what Krishna wants us to do and we're not prepared to do what Krishna is asking us to do, why will he send you a pure via medium guru? अगर हम नहीं चाहते हैं कृष्ण को सुनना, वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं, या हम तैयार नहीं है वो जो भी हमसे कहे उसका पालन करने के लिए, तो क्यों कृष्ण हमारे जीवन में प्रमाणिक गुरु को भेजेंगे? You follow the point? क्या बात समझ पाए? Yes, I follow. It's very, very important point. बहुत महत्वपूर्ण बात So है। Prabhupada said that the difficulty is not to understand who is guru. प्रभुपाद बताते हैं समस्या ये नहीं है ये पता लगाना कौन प्रमाणिक गुरु है। The difficulty is how sincere and serious are we to surrender to Krishna, to want to surrender and serve Krishna. समस्या ये है कि हम कितने गंभीर और ईमानदार हैं कृष्ण को शरणागत करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। So depending on the sincerity and seriousness of that person, Krishna will reward you accordingly. तो उस किसी भी व्यक्ति की गंभीरता और ईमानदारी के आधार पे कृष्ण उनको उसके आधार पे फल देंगे। If we really are cheating, we don't really want to know, we don't really want to do, then Prabhupada said Krishna will send you a cheating guru. लेकिन अगर हम ठगना चाहते हैं, हम करने के लिए तैयार नहीं है जो भी हमसे करने को कहा जाएगा, तो कृष्ण हमें ठग गुरु भेजेंगे। Then he'll just say, oh, just do whatever you want to do, just offer it to Krishna. फिर वो कहेंगे हाँ जो भी आप करना चाहते हो करो, बस उसको कृष्ण को अर्पण करो। Right? Yes. But if you really want to know what Krishna wants you to do and you're prepared to surrender and try your best to execute it, then Prabhupada said Krishna will send you a very nice guru. लेकिन अगर आप उस चीज़ को सुनने के लिए तैयार हैं, कृष्ण आपसे क्या करवाना चाहते हैं, और आप पूर्ण रूप से तैयार हैं जो भी कृष्ण आपको कहें उसको करने के लिए, तो प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण आपके जीवन में प्रमाणिक गुरु भेजेंगे। And real guru means pure via medium of Krishna. और असल गुरु कृष्ण का शुद्ध माध्यम होता है। So Krishna manifests and speaks to his true representative. तो कृष्ण प्रकट होते हैं और अपने शुद्ध माध्यम के से प्रकट होते हैं। That parampara, disciplic succession. परंपरा शिष्य। Everyone can claim to be a guru in disciplic succession. सभी कोई दावा कर सकते हैं गुरु होने का या परंपरा होने का। But whether they are or not is another question. लेकिन वो है या नहीं ये दूसरा सवाल है। You cannot just put on a shirt and say, oh, today I decide to be a pure via medium and a guru or Krishna. आप कोई शर्ट पहन के आकर नहीं कह सकते आज मैंने फैसला लिया है कि आज मैं कृष्ण का शुद्ध माध्यम गुरु के रूप में कार्य करूंगा। Doesn't it depend on whether Krishna decides to show up there? तो ये क्या कृष्ण के ऊपर निर्भर नहीं है कि वो फैसला करेंगे कि वो प्रकट होना चाहते हैं वहाँ या नहीं? It's like, okay, I'm going to be a pure via medium of Krishna today. I'm a guru today. ऐसा हम कह सकते हैं कि हाँ आज मैं कृष्ण का शुद्ध माध्यम बनने का प्रयास करूंगा, आज मैं गुरु बनूंगा। And then Krishna not telling you anything. और फिर कृष्ण आपको कुछ बता ही नहीं है। Then what are you supposed to say? तो फिर आप क्या बोलेंगे? Doesn't that require Krishna to manifest himself there? जो क्या जरूरी नहीं है कृष्ण वहाँ प्रकट हो?
So isn't that up to Krishna to determine who he will speak to? तो ये कृष्णा के ऊपर निर्भर नहीं है कि कृष्णा फैसला करेंगे वो किसके माध्यम से प्रकट होना चाहते हैं। Srila Gaura Swami used to say Krishna knows who is his own man. श्री गौर स्वामी महाराज बताते थे कृष्णा को पता है उनके निज जन कौन है। We don't know who is Krishna's own man. हमें नहीं पता कृष्णा के निज जन कौन है। We think we do. हम सोचते हैं हम But if our intelligence and faith is all contaminated and imperfect, then how we can truly understand them? लेकिन अगर हमारा बुद्धि और श्रद्धा दूषित है भौतिक प्रकृति से तो कैसे हम पता चलेगा कौन गुरु है कौन। Krishna is on transcendental Shuddha Sattva platform. कृष्णा दिव्य स्तर पे है शुद्ध सत्व स्तर पे। His devotee is also on that platform. और उनके भक्त भी उसी स्तर पे With Krishna. कृष्णा के साथ है। Holy name is on that platform. और पवित्र नाम भी उसी The स्थान Dham is on that platform. धाम भी उसी The स्थान Leelas, the pastimes, everything. Transcendental platform. लीलाएं सभी कुछ दिव्य स्तर पे। How's a conditioned soul with contaminated mind, intelligence, and senses? How is he possibly going to understand what and who is on that platform? कैसे कोई बद्ध जीवात्मा जिसका मन बुद्धि इंद्रिय पूरी तरह दूषित है कैसे समझ पाएगा कौन सी चीजें दिव्य स्तर पे हैं। Srila Gaura Swami used to say, "You are not the seer. श्री गौर महाराज बताते थे आप दृष्टा नहीं हैं, You are to be seen." आप दृश्य हैं। So if one shows that seriousness and sincerity towards Krishna, then Krishna will mark it. He'll recognize that. तो अगर कोई अपनी गंभीरता या ईमानदारी कृष्णा को दिखाता है तो कृष्णा उस बात को ध्यान रखेंगे। And the reward will be is that the first promise is the first installment of mercy is he'll send you bona fide spiritual master. और प्रभुपाद बताते हैं और पहली कृपा उसको यह प्राप्त होगी अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो कृष्णा उनको प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु भेजेंगे। And he'll give you intelligence and faith spiritually to understand that and to accept that. Yes, this is Krishna's arrangement. This is the place I can hear Krishna manifesting. Then you'll surrender. और कृष्ण आपको वो बुद्धि और श्रद्धा देंगे भीतर से कि ये आध्यात्मिक व्यवस्था है, ये व्यवस्था उन्होंने बनाई है और इस व्यवस्था से वो आपसे बात करेंगे और उस व्यवस्था में वो प्रकट होंगे। If Krishna doesn't convince you and give you intelligence and faith, why you'll surrender there? अगर कृष्ण ने आपको आश्वस्त नहीं किया है, आपको बुद्धि और श्रद्धा नहीं दी है, क्यों वहाँ जाके आप शरणागत करेंगे? Well, I hope Krishna will manifest to him. मुझे उम्मीद है कृष्ण वहाँ प्रकट होंगे। I hope he can tell me what Krishna wants me to do. मुझे आशा है कि वो मुझे बता पाएंगे कृष्ण मुझसे क्या चाहते Wishful हैं। thinking and hoping is not enough. ये कल्पनात्मक सोच या हमारी विचार We have to पर्याप्त have नहीं। unflinching faith and intelligence from Krishna. हमें अटूट श्रद्धा विश्वास प्राप्त करना होगा कृष्ण से। Prabhupada said Krishna will, as Paramatma Super Soul, will dictate to you. कृष्ण बताते हैं परमात्मा आपको दिशा दिखाएंगे। Krishna will tell you who is your guru. कृष्ण आपको बताएंगे कौन है आपके गुरु। Not that you pick the guru. आप गुरु को नहीं चुनेंगे। That's a big misconception. ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। You're going to condition soul after 6 months, 1 year, and the movement, oh, pick a guru. 6 महीने 1 साल कोई अगर इस आंदोलन में जुड़ा हुआ है उसको कहा जाता है नए आदमी को कि आप गुरु चुनो। I mean, who are the gurus? फिर वो कहते हैं गुरु कौन So है? here's a list. फिर कहते हैं ये हमारा पूरा लिस्ट है, सूची है। Right? But because you live here, basically you have like 1, 2, 3 choices. लेकिन क्योंकि आप यहाँ रहते हैं तो आपके पास 2 ही 3 गुरु आप चुन सकते हैं। So that's how. Where does it say that that's how you understand who's your guru? कहाँ ऐसी बात लिखी है इस तरह से आप गुरु को समझ पाएंगे? That's not according to Guru Sadhana Shastra. ये गुरु साधु शास्त्र के आधार पे नहीं है। So the guru is supposed to be teaching Guru Tattva. तो गुरु तत्व सिखाना चाहिए। If the guru doesn't know what is Guru Tattva, how he can be a guru? तो अगर गुरु को ही गुरु तत्व नहीं पता है तो कैसे वो गुरु है? It's common sense, isn't it? तो ये सामान्य Yes, जानकारी। I'm a guru, but I don't know anything about Guru Tattva. हाँ मैं गुरु हूँ लेकिन मुझे गुरु तत्व के बारे में कुछ भी नहीं पता है। I can't give you the proper understanding and the means and the process to understand who's a guru. Then how can you pick who's going to be the guru? How will you understand who's your guru? मैं आपको वो जानकारी, वो प्रक्रिया, वो तरीका नहीं बता सकता कैसे आप प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु को चिन सकते हैं, तो कैसे वो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। So if some Prabhupada says, if you're not trained to understand what is a diamond,
how do you go shopping for the diamond? तो प्रभुपाद बताते हैं अगर आपको प्रशिक्षण नहीं मिला है कैसे आप हीरे की खरीदारी कर सकते हैं, कैसे आप हीरा खरीद पाएंगे? So first training must be done. तो पहले प्रशिक्षण जरूरी है। So without faith in Krishna and Guru Sadhu and Shastra, how will you measure and understand anything properly? तो बिना कृष्णा में, गुरु साधु शास्त्र में श्रद्धा प्राप्त किए बिना कैसे आप किसी भी चीज को सही तरीके से तुलना कर पाएंगे? You tell some ignorant guy he doesn't know anything, you know, he's maybe a little sincere for spiritual life, okay, pick a guru. आप किसी अज्ञानी व्यक्ति को जिसको कोई जानकारी नहीं है आध्यात्मिक जीवन के बारे में, लेकिन वो थोड़ा गंभीर है, उसको कहेंगे आप गुरु चुन लो। How's he going to know what and who is a guru? कैसे उसको पता चलेगा कौन है, क्या है गुरु? What are the minimum qualifications of choosing a guru? And suppose in spiritual life, what are the minimum qualifications? How many days you enter in spiritual life and then you are choosing a guru? What is it? He's asking, is it like I have to be in spiritual life for a certain, I have to be in spiritual life for a certain amount of time, and I can choose a guru, or how does it work? Whenever you convince Krishna, प्रभु का सवाल है कि कितने समय के बाद, कितने दिनों के रहने के बाद कि मैं योग्य हो जाऊंगा प्रमाणिक गुरु को चुनने के लिए? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, जिस दिन आप कृष्णा को आश्वस्त कर देंगे उस दिन। whenever you convince Krishna that you want to fully surrender and serve him, then Krishna will make an arrangement to be the guru. जिस दिन आप कृष्णा को पूरी तरह से आश्वस्त कर देंगे कि आप उनको पूर्ण रूप से शरणागत करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तब आपको कृष्ण प्रमाणिक गुरु भेजेंगे। Now, what is the intensity and seriousness of your sincerity and seriousness? That is only question. आपकी कितनी इच्छा शक्ति है, आपकी गंभीरता ईमानदारी में, ये आपकी परीक्षा है। What if in last life you were practicing bhakti, devotional service, and you were very, very strong in your interest and desire, sincerity, seriousness to surrender to Krishna? Then won't it be much quicker in this lifetime? तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पिछले जन्म में आप बहुत ज़्यादा गंभीर थे, बहुत ईमानदार थे, बहुत रुचिकर थे कृष्ण को शरणागत करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए, तो ऐसा होगा इस जन्म में आपको बहुत तेजी से वो लाभ प्राप्त हो सकता है। Because Krishna says, whatever you do, you'll carry that into your next life. कृष्ण ने कहा है जो भी आप कार्य करेंगे उसका अगले जन्म में आपको उसका फल मिलेगा। So if someone previously got this type of sukriti, bhakti sukriti, by serving sadhus, Vaishnavas, then in this life it will be much more natural, much more quick. तो अगर किसी ने बहुत सारी भक्ति स्वीकृति प्राप्त की है किसी तरह से साधुओं की सेवा करके पिछले जन्म में, तो इस जन्म में बहुत तेजी से उसको प्रगति कर सकते हैं, चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। Because they're carrying that sukriti, bhakti sukriti, from previous life. क्योंकि पिछले जन्म की भक्ति स्वीकृति वो इस जन्म में भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। So as soon as they want to surrender and serve Krishna sincerely, Krishna will immediately make arrangement to meet bona fide guru. तो जिस समय तुरंत ही वो कृष्णा को आश्वस्त कर देंगे, वो उनको शरणागत करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, कृष्णा तुरंत ही उनके जीवन में आध्यात्मिक गुरु भेजेंगे। Otherwise, this time factor is just external thing. वरना ये समय का अवधि ये बस बाहरी कारण है। When you get mercy of Guru Krishna, in one moment you can understand this person is my Satguru. अगर आपको गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, एक क्षण में आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति सद्गुरु है। That much seriousness not come our mind also. That much seriousness. Suppose you have choosing a guru. He says, I'm not so much serious, so how can I get more of that sincerity and seriousness? We have to desire that. We have to understand that is the prerequisite. So how and where do we get that? That now becomes number one requirement. How do we pick that up? तो जब प्रभु का सवाल है कि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मैं उतना गंभीर, उतना ईमानदार नहीं हूँ कि मुझे ये गुरु प्राप्त हो सके, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि अब आप ये इच्छा प्राप्त कर सकते हैं, सबसे पहले शुरुआत कर सकते हैं, तब आप ये समझ पाएंगे कि ये सबसे पहली ज़रूरत है कि मैं इतनी गंभीर ईमानदार हो पाऊँ कि कृष्णा मेरे जीवन में प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु भेजे, तो मुझे कहाँ से ये मिल पाएगी, कहाँ से प्राथमिकता मैं पा पाऊँगी। Because if that's what is required to convince Krishna to send you his true representative, then what is the talk about guru? Who's a guru? This is a guru. What is guru? What does all of that discussion even matter
if we don't have sincerity and seriousness to want to surrender to Krishna. तो अगर हम इतने गंभीर ईमानदार नहीं हैं कृष्ण को शरणागत करने के लिए, तो इस हमारी इतनी चर्चाओं का क्या फर्क पड़ता है? कौन है गुरु, क्या है गुरु, ये सब विषयों का कोई महत्व नहीं है चर्चा करना। For some reason, this is like big topic, right? Everyone talking about guru, guru this, guru that. किसी वजह से ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय होता है कि कौन है गुरु, क्या है गुरु, बहुत चर्चा होती है इसमें। 50 years, right, in ISKCON, everyone talking about Guru Tattva, and no one knows what is Guru Tattva. 50 साल से ISKCON में गुरु तत्व के ऊपर बात हो रही है और किसी को भी गुरु तत्व नहीं पता। Most people don't understand. ज़्यादातर लोग समझते नहीं, But they're talking about it. लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं। But what is the basis of all of that talking? लेकिन क्या आधार है उनके सारी बातचीत करने का? It's all, materialistic intelligence and faith and understanding. It's all faulty. ये पूरी तरह से भौतिकतावादी श्रद्धा बुद्धि पूरी तरह से त्रुटियों से भरा है। Because they didn't receive scientific knowledge of those tattvas by the mercy of Guru and Krishna. क्योंकि उनको वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तत्वों का कृष्ण की कृपा से। So because they never heard it, they cannot realize it. क्योंकि उन्हें कभी सुना नहीं है, कभी वो साक्षात्कार नहीं कर सकते। And that's why hardly anybody talks about it. और इसलिए मुश्किल से कोई इसके बारे में बात करता है। You've been in ISKCON for some time, right? आप ISKCON में कुछ समय से रह चुके हैं। And Prabhu, you also, right? प्रभु आप भी। And you heard many sadhus, many gurus, right? आपने बहुत सारे साधु, बहुत सारे गुरुओं से सुना हो। So is everybody explaining the scientific process of Guru Tattva? तो क्या सभी को ये वैज्ञानिक प्रक्रिया समझा रहे हैं गुरु तत्व की प्रक्रिया को? So then how does somebody know who to accept as a guru? तो कैसे किसी को पता चलेगा कैसे किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करना है? You give them no training. आप उनको कोई प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। Now we're talking about what sincerity and seriousness for Krishna to send you bona fide guru. So immediately you think, okay, I'm not sincere and serious enough. That's the work I have to do right now. तो अब हमें ये समझ में आ रही है हमारी पहली ज़रूरत ये है ईमानदारी और गंभीरता कृष्ण को शरणागत करने के लिए। तो अब हम ये समझ पा रहे हैं कि हाँ मेरे पास अब ये नहीं है तो मैं कैसे इसको प्राप्त कर सकता हूँ। Otherwise, how Krishna will send me? वरना कैसे कृष्ण मुझे प्रमाणी गुरु भेजेंगे? And not doing that work and just talking about who's a guru and what's a guru, it's useless. और इस कार्य को न करने के बजाय बस बात करते रहना कौन है गुरु, क्या है गुरु, ये सब पूरी तरह से बेकार है। It's just like some social conversation of the latest gossip, जैसे कोई सामाजिक बातचीत होती है कि अभी नया क्या चल रहा है बातचीत में। Prabhu, am I saying right there? प्रभु मैं क्या सही बातें कह रहा हूँ? You're brother of my godbrother, Guru Bhai, I think, right? मेरे गुरु भाई के भाई हैं ऐसा लगता है मुझे। This one? That's your brother? क्या वो आपके भाई हैं? He's the older brother? वो उनके बड़े भाई हैं। Acha. Elder brother. Hare Krishna. This one. Same village? Yes. Acha. Hare Krishna. So, some nice devotees came for this discussion. That's why we're able to discuss this topic. तो कुछ अच्छे भक्त आए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इसलिए हम अच्छे से इसके ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। All of this I learned from my spiritual master, Srila Govinda Swami. ये सब मैंने सीखा मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रील गौर गोविंद स्वामी से। And he showed me where all of this evidence talks about it. और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। And I never saw it also by my reading and studying in Prabhupada's books. और मैंने खुद भी कभी इसको नहीं देखा था स्वयं के किताबों को पढ़ने और उनका अध्ययन करने से। Even though it's everywhere there. लेकिन यद्यपि ये सभी जगह मौजूद था। So why no one's talking about it is because they never heard it, they never realized it. क्यों कोई इसके बारे में बात नहीं करता? क्योंकि कभी किसी ने इसके बारे में सुना नहीं, कभी किसी ने साक्षात्कार नहीं किया। So if you never heard it and you don't realize it and you can't explain it to somebody else with faith and realization, how you can be a guru? तो आपने खुद सुना नहीं, आपने खुद साक्षात्कार नहीं या कहीं नहीं किया, आप किसी को बताने व्याख्या नहीं कर सकते सही श्रद्धा और साक्षात्कार से, आप कैसे गुरु बन सकते हैं? That type of guru needs a guru. इस तरह के गुरु को खुद गुरु की जरूरत है। But this is very unpalatable thing to say. लेकिन ये बहुत कड़वा सत्य है उन लोगों के लिए। Can we share about your choosing a guru in your personal life? About what? He wants to know how you got your bona fide guru. I suffered by accepting not bona fide gurus.
तो प्रभु का सवाल है कि आप बता सकते हैं आपके जीवन की घटना कि आपको कैसे प्रमाणिक गुरु प्राप्त हुए? तो गुरुदेव बता रहे हैं, मैंने बहुत दुख भोगा जब मैंने प्रमाणिक गुरु स्वीकार नहीं किया था। Where they're not able to answer my question, जब वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए, they're not able to destroy my doubts, वो मेरे संदेहों को खत्म नहीं कर पाए, they're not able to help me advance in my spiritual life, वो मेरी मदद नहीं कर पाए कैसे मैं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता हूँ। so I understand what that type of guru is. तो मुझे समझ में आया ये किस तरह के गुरु हैं। So I was not happy with that result. तो मैं खुश नहीं था इस तरह के I फलों से, was dissatisfied. मैं असंतुष्ट था, My soul was dissatisfied. मेरी आत्मा असंतुष्ट थी And I was not happy with the results that I got up to that point. और मैं खुश नहीं था उन सारे फलों से जो मुझे प्राप्त हुआ उस समय तक। So finally I just tried to surrender to Krishna, again rededicate myself. तो अंत में फिर से मैंने अपने आप को कृष्णा को शरणागत करने का प्रयास किया, पुनः समर्पित करने का प्रयास किया, And also to Srila Prabhupada. और शिला प्रभुपाद को। And I just begged them again and again, और मैंने उनसे भीख मांगी बार बार, please help me, whatever I'm doing up to this point is not working properly. कृपया मेरी मदद कीजिए, जो भी मैं इस समय तक कर रहा था वो सब से मेरी मदद नहीं हो पाई, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, I don't have real spiritual shelter and protection. मेरे पास कोई असल आध्यात्मिक आश्रय रक्षण नहीं है, So please send me really bona fide guru तो कृपया मुझे असल में प्रमाणिक गुरु भेजिए who can really give me shelter and protection and help me to advance in my spiritual life. जो मुझे असल में आश्रय रक्षण प्रदान कर सकता है, मेरी मदद कर सकता है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। Then after that, Srila Govinda Swami, he came to Los Angeles. और उसके बाद शिला गोविंद स्वामी लॉस एंजल्स में आए And I got invited to the class. और मुझे निमंत्रण मिला उनके क्लास में आने के लिए। I didn't want to go to the class मैं क्लास में जाना भी नहीं चाहता था because I thought they're all more or less the same. क्योंकि मैंने सोचा था ये सब एक जैसे ही है, So I was like, I don't really want to go. तो मैंने कहा मैं नहीं जाना चाहता, I heard everything already. मैं ये सब पहले सुन चुका I'm हूँ, not so satisfied. मैं उतना संतुष्ट नहीं हूँ। And devotee said, no, this Maharaj, something different is there. और उस भक्त ने मुझसे कहा कि इस महाराज में कुछ अलग है। So I said, oh, okay, let's see. मैंने कहा चलो देखते हैं। So I just went there. I had no expectation. तो मैं वहाँ गया था, मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, I certainly wasn't looking for a guru और मैं अवश्य गुरु नहीं ढूंढ रहा था, because I felt I have Srila Prabhupada and I'm trying to do my service for Prabhupada and Krishna. क्योंकि मैं सोच रहा था मेरे पास प्रभुपाद है और मैं अपनी सेवा प्रभुपाद के लिए, कृष्णा के लिए I करना was चाहता था। distributing books every day. मैं प्रतिदिन किताब प्रचार करता था। So it was a very big surprise when I started to hear Srila Govinda Swami speaking that this is not ordinary type of katha. तो जब मैं, मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित हो गया जब मैं श्री गौरव स्वामी महाराज से सुन रहा था, तो मुझे लगा कि ये कोई सामान्य कथा नहीं हो रही है। This vibration, this information is so heavy, it's hitting my soul. ये जानकारी, इनकी सब ध्वनि इतनी भारी है, ये मेरी आत्मा तक पहुंच रहा है। It wasn't some like intellectual, mental type of external experience like I always had with other type of personalities. ये किसी तरह का मानसिक या बौद्धिक स्तर का अनुभव नहीं था जैसे मेरे बाकी व्यक्तियों के साथ संग करने के बाद मुझे प्राप्त हुआ। I felt like his words were just hitting me very deeply in my soul. Like this person, I feel like I've met this person before. और जब उनके शब्द मुझे इतने भीतर आत्मा लग रहे थे, चुभ रहे थे, मुझे समझ में ऐसा लग रहा था जैसे मैं इन व्यक्ति से पहले मिल चुका हूँ। So I could see by the effects of associating and hearing from him what was happening to my heart and mind and consciousness. तो मैं देख पाया उनसे श्रवण करके मेरे अंदर जो प्रभाव हो रहा था, मेरे हृदय में, मेरी चेतना में, मेरे मन में किस तरह का प्रभाव हो रहा था। So he's completely humbling me out. तो मुझे पूरी तरह से विनम्र बनाया, Purifying my उन्होंने consciousness. मेरी चेतना को शुद्ध कर दिया And then everything became very, very quiet. और सभी कुछ बहुत शांत हो गया। And then those words were directly like going directly to my soul. और उनके शब्द सीधे सीधे मेरी आत्मा में जा रहे थे। I never had that happen before. और मेरा पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। Then I began to understand that Janmi Janmi Prabhu said. अब मैं समझ पाया जन्मे जन्मे प्रभु से ही, Guru, life after life. गुरु जन्मों Sadguru. जन्म तक, सतगुरु।
becoming, but just different body. वो आए हैं दूसरा शरीर लेकर, So you cannot recognize him because body is different. तो हम उनको पहचान नहीं सकते क्योंकि उनका शरीर दूसरा है। Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said you don't recognize the Guru with your eyes, but you recognize with your ear. श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं आप गुरु को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी कानों से पहचान सकते हैं। So that vibration, that hearing from Sadhguru Vaishnava, this is ultimately what purified me and convinced me. तो साधु गुरु वैष्णव से सुनने के बाद उसके शब्द ध्वनि से उसने मुझे शुद्ध किया, मुझे योग्य बनाया। Then I prayed to Krishna in the heart of Chaitanya Guru Paramatma. और मैंने प्रार्थना की अपने हृदय में परमात्मा चैत्य गुरु कृष्ण से। I asked him, did you make this arrangement here? और मैंने उनको पूछा क्या आपने ये व्यवस्था की है मेरे लिए? That I came to meet this Maharaj. Is this your arrangement? कि मैं महाराज से मिल पाया, क्या ये आपकी व्यवस्था है? Please give me intelligence and faith to understand whether this person, whether you sent him and whether he's my guru or not. कृपया मुझे बुद्धि और श्रद्धा दीजिए जानने के लिए कि ये व्यक्ति जो आपने भेजा ये मेरे गुरु है या नहीं। So I kept praying to Krishna in the heart. तो मैं कृष्णा से प्रार्थना करता रहा अपने हृदय में to guide my intelligence and faith. मेरी बुद्धि और मेरी श्रद्धा को दिशा निर्देशन देने के लिए। And then Maharaj started speaking. और फिर महाराज बोलने लगे that Murali, I know my words are pinching you. मुरली मुझे पता है मेरी बातें आपको चुभ रही हैं। Because he was speaking so heavy way. क्योंकि वो बहुत भारी भरकम तरीके से He's telling me, why do you become a real devotee, real das, instead of pretending that you're a das? मुझे कह रहे थे क्यों आप असल भक्त नहीं बन जाते और दिखावा कर रहे हैं बस कि आप एक असल दास। So this was like a spear to the heart. तो मेरे हृदय में भाले की तरह चुभ रहे थे उनके बात। But he telling, I know my words are pinching you. लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे पता है मेरी बातें आपको चुभ रही हैं। But I'm not your enemy, Murali. लेकिन मैं आपका शत्रु नहीं हूँ मुरली। I'm your well-wisher. मैं आपका शुभचिंतक हूँ। I have come here for you, Murali. मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ मुरली। Won't you help me? क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? Then immediately, by Krishna's mercy, Gurudeva's mercy, I could understand this is Janmi Jami Prabhu says, Sadguru manifesting. तो तुरंत ही गुरु और कृष्ण की कृपा से मैं समझ पाया ये मेरे प्रमाणी गुरु जन्मे जन्मे प्रभु से सदगुरु आध्यात्मिक गुरु है मेरे। That's why what I'm telling is not just some philosophical, theoretical discussion. इसलिए जब मैं ये कह रहा हूँ तो ये किसी तरह का सैद्धांतिक मौखिक चर्चा नहीं है बस। And really, if you really cry before Krishna and you want to surrender, you might have material desire, material attachment. There might be so many problems there, but in the heart of hearts, you say, I don't want any of that, and I just want to surrender to you, and I want to really become pure devotee, develop love and devotion for you. If you're convinced like that, and you convince Krishna, Krishna will understand it. अगर आप आपके पूरे हृदय से अगर आप ये चाहते हैं कृष्ण को शरणागत करना चाहते हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं हो सकता है आपके पास बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हो बहुत सारी समस्याएं हो आपके साथ इन सब के होने के बावजूद भी आप कृष्ण को आश्वस्त कर पाएं कि नहीं मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता मैं शुद्ध भक्ति चाहता हूँ आपके प्रति और कृष्ण इस बात से आश्वस्त होते हैं तब आपको वो बताएंगे आपके प्रमाणी तब वो आपको अपने प्रमाणी गुरु भेजेंगे। That's how I got my guru. इस तरह से मुझे मेरे गुरु मिले। All acharyas, previous acharyas, telling same exact thing. This is Guru Tattva. सारे आचार्य पूर्व आचार्य इसी को बता रहे हैं यही है गुरु तत्व। Guru Tattva is Paramatma Tattva. गुरु तत्व परमात्मा तत्व। Paramatma Tattva is Guru Tattva. परमात्मा तत्व गुरु तत्व। Guru inside and external manifestation of Guru. गुरु भीतर और गुरु का बाहरी प्रकट रूप। Without the mercy of Krishna, Guru and Krishna, how can you understand those tattvas? बिना गुरु कृष्ण की कृपा से कैसे आप इन तत्वों को समझ सकते हैं? Who will you ask? आप किनको पूछेंगे? Where will you get the intelligence and faith required? कहाँ आपको ये जरूरी बुद्धि श्रद्धा प्राप्त हो पाएगी? Will it come from Krishna? Or will it come under modes of material nature by Maya? क्या ये कृष्णा से आएगी या माया से आएगी प्रकृति के गुणों के अधीन? Will you depend on your feelings and your emotions and what you think you're understanding? क्या आप अपनी भावनाओं अपनी अनुभूति के ऊपर निर्भर रहेंगे आप सोच समझ पाएंगे उसके आधार पे ये कहाँ से आ रही है? That's a very faulty way of coming to the conclusion. ये बहुत त्रुटिपूर्ण तरीका है निष्कर्ष तक पहुँचने That का। intelligence and faith it must come from Krishna. ये बुद्धि और श्रद्धा अवश्य कृष्णा से आनी चाहिए। Without a Tao Shraddha, without unflinching faith, without faith in Krishna, how you can understand Guru Tattva? बिना दाव श्रद्धा के अटूट श्रद्धा के कृष्ण में कैसे आप गुरु तत्व समझ सकते हैं?
And without unflinching faith in Guru and Krishna, how can you know what is your instructions? और बिना अटूट श्रद्धा के गुरु कृष्ण में कैसे आप समझ पाएंगे आपके क्या निर्देश है? And without those instructions, how will you please Guru and Krishna to get continued mercy and purification in order to advance further in your spiritual life and understanding? और बिना उन निर्देशों के गुरु कृष्ण से प्राप्त किए बिना कैसे आप उनको प्रसन्न कर पाएंगे, कैसे आप शुद्ध हो पाएंगे, जो जरूरी है आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए। So we have to associate and hear from persons who are serious. तो हमें संग करना होगा, ऐसे व्यक्तियों से सुनना होगा जो स्वयं गंभीर हैं given everything up for this purpose. और उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है सिर्फ इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। And if we not give everything up, we have a desire to give everything up. अगर हमारी इच्छा नहीं, अगर हमारे पास ये इच्छा नहीं और हम इच्छा करना चाहते हैं ऐसी इच्छा प्राप्त करना, gradual process of purification. क्योंकि ये धीरे-धीरे प्रक्रिया है शुद्धिकरण की। And Krishna is the witness and the judge. और कृष्ण सभी चीजों के गवाह हैं, न्याय करता है। And we get what we और deserve. हमें वही मिलेगा जिसके हम लायक हैं। And what we're getting is because we deserved it. और जो हमें मिल रहा है क्योंकि हम उसी के लायक हैं। That means somehow or other we're able to please Krishna and please Guru. यानी कि किसी तरह से हमने गुरु को, कृष्ण को प्रसन्न कर पाए। Otherwise, how is it possible? वरना कैसे ये संभव है? All right? ठीक है। Guru means a heavy. गुरु का मतलब है भारी। So the words and how it's hitting you is a heavy. तो जिस उनके शब्द जिस तरह से आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे It's वो बहुत not भारी just a होगा। light conversation. कोई हल्की फुल्की चर्चा नहीं होगी। Somebody talks some philosophy, you're just in your intellectual mind, you're just trying to understand from a Shastric point of view. It's a very light, lagu. अगर कोई इस तरह का बस सैद्धांतिक चर्चा करेगा जो आपकी बुद्धि को, आपके मन को प्रभावित करेगा, कैसे उस शास्त्र के आधार पर है, तो ये बस उसको प्रभावित कर पाएगा। When it's coming from Krishna, Guru, that means it's heavy. और जब ये कृष्ण गुरु से आएगा तो वो भारी है। That means that information, that vibration, that experience and the effect that comes on the platform of the soul. यानी कि वो जानकारी, वो अनुभव, वो आत्मा के स्तर पे आएगी। That's a much different level of associating. ये बहुत ही अलग स्तर का। All right? ठीक है। So you have some work to do. तो आपको कुछ काम करना है। Right? Now you have to cry before Krishna. अब आपको कृष्ण के सामने रोना है। Somebody asked Srila Gurudev, what happens if you can't cry before Krishna? किसी ने श्री गुरुदेव से एक बार पूछा कैसा होगा अगर कोई कृष्ण के सामने रो नहीं सकता? Because Gurudev said everybody who cried for Krishna, they all got Krishna. क्योंकि गुरुदेव ने कहा जो भी कृष्ण के लिए रोया उसने कृष्ण को प्राप्त किया। But we're not crying for Krishna. लेकिन हम कृष्ण के लिए रो नहीं रहे हैं। My Gurudev said, you're not crying for Krishna because you're crying for Maya. मेरे गुरुदेव कहा करते थे आप कृष्ण के लिए नहीं रो रहे हैं क्योंकि आप माया के लिए रो रहे So हैं। how you get Krishna if you're crying for Maya? तो कैसे आपको कृष्ण मिलेंगे अगर आप माया के लिए रो रहे हैं? So the devotee said, well, Gurudev, how? You said you have to cry for Krishna. I'm not crying for Krishna. तो गुरुदेव, कुछ भक्त ने गुरुदेव से सवाल पूछा, आप कह रहे हैं हमें कृष्ण के लिए रोना चाहिए लेकिन मैं कृष्ण के लिए रो नहीं पा रहा हूँ। What to do? मैं क्या करूँ? And Gurudev said, you should cry because you can't even cry. और गुरुदेव ने उत्तर दिया आपको रोना चाहिए क्योंकि आप रो भी नहीं पा रहे हैं। Most time he answered like this, you should cry because what's required to get Krishna, you're not even willing to do that. ज्यादातर समय गुरुदेव ने ये उत्तर दिया जो जरूरत है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आप वो भी करने के लिए योग्य नहीं है। And sometimes he would just say, you're not crying for Krishna because you're not serious. कभी कभी उन्होंने उत्तर दिया आप कृष्ण के लिए नहीं रो रहे इसका मतलब आप गंभीर नहीं है कृष्ण को। You're not serious enough. आप गंभीर नहीं है पर्याप्त रूप से। So Prabhupada said the sincerity, seriousness to want Krishna, to surrender to Krishna, that we have to convince Krishna and ourselves. और प्रभुपाद बताते हैं जो गंभीरता, ईमानदारी जो कृष्ण को आश्वस्त करने के लिए जरूरत है और स्वयं को आश्वस्त करने के लिए जरूरत है। Right? Sometimes you make a prayer, right, and you say, "Oh, that was just from the lips only." कभी-कभी आप कुछ प्रार्थना अर्पण करते हैं आप समझ पाते हैं मेरी प्रार्थना है बस होठों तक गहरी है। So even we're saying that, even I'm not convinced by that prayer. तो कभी-कभी हम भी कहते हैं कि हाँ मैं खुद आश्वस्त नहीं हूँ मेरी प्रार्थनाओं से। Because it's just cheap. क्योंकि बहुत सस्ती है। So then Krishna is going to be convinced by this type of prayer. तो क्या कृष्ण आश्वस्त होंगे हमारे उस तरह की प्रार्थनाओं से? So if we're not convinced, how we're going to convince Krishna? अगर हम खुद आश्वस्त नहीं हम कैसे कृष्ण को आश्वस्त कर सकते हैं? And without getting Krishna, you cannot get Guru. और बिना कृष्ण को प्राप्त किए बिना आप गुरु नहीं प्राप्त कर सकते।
And without Guru Krishna's mercy, then where are we? और बिना गुरु कृष्ण कृपा के हम कहाँ हैं? Then we're just lost. तो हम बस भटक जाएंगे, We're just groping in the dark. हम बस अंधेरे में भटकते रहेंगे। Maybe this, maybe हो that. सकता है ये, हो सकता है वो, Maybe here, maybe हो there. सकता है यहाँ, हो सकता है वहाँ। We're like a lost soul. हम जो भटकी हुई आत्मा की तरह, With no shelter and protection. कोई आश्रय, कोई रक्षण नहीं। That's also a very dangerous position. ये भी बहुत खतरनाक स्थिति है। Anybody else? कोई अन्य? What's your question tonight? आज आपका सवाल कहाँ है? I think I was calling you a demon last night in front of your mother and your sister. मुझे याद है पिछली रात मैं आपको असुर कह रहा था आपकी माँ और आपकी बहन के सामने। I hope they forgave me. मुझे उम्मीद है मुझे क्षमा करेंगे। We want her to become nice devotee. हम चाहते हैं वो अच्छी भक्त बने। She also wants, वो भी चाहती है, but it's not easy to change our nature. लेकिन ये आसान नहीं है हमारे स्वभाव को बदलना। You're supposed to start the spiritual life when you're like, 5 years old. हमें 5 साल की उम्र से ही आध्यात्मिक जीवन शुरुआत करनी चाहिए। But we're getting a really late start to be a devotee. प्रहलाद महाराज बताते हैं 5 साल की उम्र से भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। So now, because so much asatsanga, so much material contamination, क्योंकि अब इतना सारा सत्संग, इतना सारा भौतिक गंदगी जमा कर लिया है, so much different impressions, so much misconceptions, बहुत सारे अलग अलग प्रभाव हमारे पर, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, so many different desires, बहुत सारे अलग अलग इच्छाएं हैं, attachments. आसक्तियां। It's much more complicated now. अब बहुत ज़्यादा जटिल बन चुका है। So without mercy of Guru Krishna, how will it be possible? बिना गुरु कृष्ण कृपा पे कैसे ये संभव हो सकता है? How will we really change our nature, our condition? कैसे हम अपना स्वभाव, अपनी स्थिति को बदल पाएंगे? We need powerful Guru हमें एक शक्तिशाली गुरु चाहिए and his prayers to Krishna on our behalf. और उनकी प्रार्थना कृष्णा से हमारे लिए, Then it's possible. तब ये संभव है। Otherwise, you just get some guru. Oh yes, here's a cookie, here's a garland. वरना आपको ऐसा एक गुरु मिलेगा, वो ये आपके लिए कुकी, ये आपके लिए माला। It doesn't tell you anything, doesn't bother you, doesn't challenge you, doesn't confront you. आपको कुछ नहीं बताएंगे, कुछ आपको चुनौती नहीं देंगे, आपका सच बाहर नहीं लाएंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। Yes, whatever you're doing, that's nice. जो भी आप कर रहे हैं सब अच्छा है। You think that's going to change your conditioned nature? आपको लगता है कि आपकी स्थिति को बदल पाएगा ऐसी चीज? Or they just flatter you for worship and money? या फिर वो बस आपकी चापलूसी करेंगे आपके पैसे और आपकी पूजा के लिए? Pranam, pranami, प्रणाम प्रणाम, pratishta. प्रतिष्ठा करेंगे। You think that type of guru is going to help you? आपको लगता है इस तरह के गुरु आपकी मदद कर पाएंगे? They won't take a risk and speak the truth to you. वो खतरा नहीं उठाएंगे आपको सत्य बताने के लिए। They'll not challenge you. वो आपको चुनौती नहीं They'll देंगे। not confront you. वो आपका सच नहीं बताएंगे। They'll not slap you. वो आपको थप्पड़ नहीं मारेंगे। Sometimes we need a good slap, isn't it? कभी कभी अच्छे थप्पड़ की जरूरत पड़ती है। My guru slaps you, you cannot take him to the court. मेरे गुरुदेव कहा करते थे, गुरु आपको थप्पड़ मारेंगे, आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। That's his mercy. वो उनकी कृपा है। If anyone else slaps you, you can bring them to the court. अगर कोई अन्य आपको थप्पड़ मारता है, आप उसको कोर्ट लेके जा सकते हैं, But not the guru. लेकिन गुरु को नहीं। So most people, they don't want that kind of guru. ज्यादातर लोग इस तरह के गुरु नहीं चाहते। They just want like a fashion statement. उनको बस किसी तरह का फैशन चाहिए। Like I have a guru, वो मेरे पास गुरु है, I have a spiritual name. मेरा आध्यात्मिक नाम है। What are the difference between Sikhya Guru and Diksha Guru? What's the difference? You didn't even figure out whether you want to surrender to Krishna yet. तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के बीच में क्या अंतर है? तो गुरुदेव अभी उत्तर दे रहे हैं, आपको तो अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाए कि आप गंभीर हैं कि नहीं कृष्ण को शरणागत करने के लिए, है ना? It's like, it's like going to the car lot and they have all different varieties of fancy cars and you don't have any money in your pocket and you're saying, what's the difference between a Jaguar and a Mercedes? जैसे कि आप किसी कार की दुकान में गए हैं कार खरीदने के लिए, बहुत सारी अलग अलग तरह की वैरायटी की गाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और आपके पास कोई पैसे नहीं है, तो आपको पूछ रहे हैं कि जगुआर और मर्सिडीज के बीच में क्या अंतर है, मुझे बताइए।
That means like in the future when you get some money, then you might buy one of those? Is that it? इसका मतलब ये है कि आप भविष्य में जब पैसे कमा लेंगे तब आप जाके गाड़ी खरीदेंगे, इसलिए आप पूछ रहे हैं। You're just trying to get some inspiration? आप बस कुछ प्रेरणा पाने का प्रयास कर रहे हैं। Sometimes it's like this. You need to be inspired, otherwise how you collect the money? कभी-कभी हमें प्रेरणा की जरूरत होती है, वरना हम पैसे क्यों इकट्ठा करेंगे? So bona fide Diksha Shiksha Guru, equal identical manifestation Paramatma. और प्रमाणिक शिक्षा दीक्षा गुरु बराबर और एक समान परमात्मा के बाह्य प्रकट रूप होते हैं। कृष्णा। One man, he told me, he said, I have 5 Shiksha Gurus. एक व्यक्ति ने मुझे एक बार कहा, मेरे पास 5 शिक्षा गुरु हैं। Wow, that's unbelievable. अविश्वसनीय है। Yeah, it says 1 Diksha Guru, then you have 5 Shiksha Gurus. एक दीक्षा गुरु और 5 शिक्षा गुरु। So I said, what if they all tell you something different? कैसा होगा लेकिन वो सभी लोग आपको अलग-अलग चीजें करने को कहेंगे। Then how do you know which one Krishna wants you to do? लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कौन सा उनमें से कृष्ण आपसे करवाना चाहते हैं? He said, yeah, that's a good question. उन्होंने कहा, ये तो अच्छा सवाल है। So what's the value of all those Shiksha Gurus if you don't know what Krishna wants you to do? तो क्या महत्व इतने सारे शिक्षा गुरुओं का कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं? Better at least get one who can tell you what Krishna wants you to do. कम से कम बेहतर होगा एक ही पता लगाइए कि वो आपको बता सके कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं। Try for that first. पहले उसके लिए चाहिए। And then if you need more, Krishna will send you, he'll manifest more. और अगर आपको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो कृष्ण और ज़्यादा प्रकट होंगे अनेक रूपों में। If he wants to send an army, he'll send an army. अगर आपके लिए सेना भेजने की ज़रूरत है तो आपके लिए सेना भेजेंगे। The problem is not from Krishna's side. कृष्णा की तरफ से कोई समस्या नहीं है। Problem is from our side. समस्या हमारी तरफ से है। So we have some work to do. तो हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। To become convinced and to convince Krishna. ताकि हम आश्वस्त हो सकें और कृष्णा को आश्वस्त कर सकें। Then let Krishna show you who he's going to use to help you. तो कृष्णा को अनुमति दीजिए ये दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं आपकी मदद करने के लिए। Krishna, Prabhupada said, Krishna will dictate to you. प्रभुपाद बताते हैं कृष्णा आपको बताएंगे। You should accept this person as your guru. इस व्यक्ति को आपको गुरु के रूप में चुनना चाहिए। But if you don't have faith in Krishna and you cannot hear Krishna, लेकिन अगर आपको then how will you know who's the guru? लेकिन अगर आपको कृष्णा में श्रद्धा नहीं है, आप कृष्णा को सुन नहीं सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कौन प्रमाणिक गुरु है? Maybe him, maybe them, maybe him, I don't know. Maybe हो सकता है Maybe I'll make them all my gurus. हो सकता है मैं सभी को गुरु के रूप And में I get चुनूंगा। 5 Shiksha Gurus. तो मुझे 5 शिक्षा गुरु मिल जाएंगे। One person he told in Estonia, he said, all of them, all of the gurus, GBC, are all absolute. एक व्यक्ति ने एस्टोनिया में एक भक्त ने कहा कि जीबीसी में जितने भी सभी लोग जो हैं परम सत्य हैं। And I said, but if they're arguing with each other and they're all telling something different, then how do you know what is absolutely correct? लेकिन वो सब लोग अगर आपस में बहस कर रहे हैं और सभी लोग एक चीज नहीं बता रहे हैं तो कैसे आपको पता चलेगा उनमें से कौन सही है? And he said, anyway, he said, whatever they say, I accept it absolutely. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी कहेंगे सभी परम सत्य है। So how can you explain to this person? तो कैसे आप इस तरह के व्यक्ति को समझा सकते हैं? Prabhupada said that Siddhanta, Bhakti Siddhanta is one. कृष्ण प्रभुपाद बताते हैं भक्ति के सिद्धांत हमेशा एक है, Not even two. यहाँ तक कि 2 भी नहीं है। So how all of these differing opinions and arguing and voting and something's wrong, isn't it? तो कैसे इतने तरह के अलग-अलग तरह के बहस, अलग-अलग विचार और अलग चीजों में मतदान हो रही है? ये सब अलग चीजें क्यों हो रही है? If they all know the absolute truth, they all know the Siddhanta, why they're not saying the same thing? अगर वो सभी लोग परम सत्य जानते हैं, सभी लोग सिद्धांत जानते हैं, तो सभी लोग एक चीज क्यों नहीं कह पा रहे हैं? Why the disagreement, argument there? क्यों उनके बीच असहमति हो रही है, बहस हो रही है? They cannot be on the Siddhanta, on a conclusion. सिद्धांत निष्कर्ष के ऊपर वो ऐसा नहीं कर सकते, Because that's coming from Krishna. क्योंकि वो कृष्ण से आता है। If we're arguing, it means that at least one or all of us don't understand what Krishna is saying. अगर हम बहस कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है उनमें से कम एक या सभी कोई नहीं जानता कृष्ण क्या चाहते हैं। That's why we're all disagreeing and arguing. इसलिए सभी लोग असहमत हैं, सभी लोग बहस कर रहे हैं। Some common sense also is required here. कुछ सामान्य ज्ञान भी यहाँ जरूरी है। Anyway,
I just accept everything, everyone is absolute. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं That's किसी where को your intelligence and faith is, go for it, you know. कोई बात नहीं, मैं किसी को भी अपने परम सत्य के रूप में स्वीकार करूँगा। अगर आपकी श्रद्धा बुद्धि उसमें है तो जाइए उसके पीछे। Good luck. आपको बहुत सौभाग्य हो। When someone finally says good luck, it's like, wow, you know, that doesn't sound so positive, is it? कभी कभी कोई कहता है कि हाँ आपको सौभाग्य शुभकामनाएं मिले, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सही शुभकामनाएं हमें मिल It's रही like you're going to the casino, right? जैसे कि हम You say good luck, you know, I hope you're lucky tonight, you know. Just roll the dice, you know. जैसे कोई जुआ खेलने जाता है तो उसको कहते हैं कि हाँ आपको शुभकामनाएं हो, तो जैसे आप कुछ आपका भाग्य अच्छा है तो आपको कुछ मिल पाएगा। Right? चक्र घुमाइए। That's how you hit the ball and it bounces around and then wherever it lands. Okay? Number 12. Who's number 12? Okay, I found out who is my guru. कि आप जाएंगे, गेंद घुमाएंगे, गेंद घूमेगी और अंत में जाके घूम के 12 नंबर पर कहेंगे वो 12 नंबर पे कौन है? हाँ ये मेरे गुरु है। And then you say, well, where does it say that you do like that to pick your guru? फिर आप कहेंगे कि कहाँ ऐसा बताया गया इस तरीके से आप गुरु अपना चुन सकते हैं? Anyway, that's क्या मतलब यही मेरी श्रद्धा है। okay. ठीक है। Prabhupada calls it nonsense faith. प्रभुपाद इसको बकवास श्रद्धा कहते हैं। Rasputam faith. बदमाशी वाली श्रद्धा। So you want to depend on that? Go for it. अगर आप उस पर निर्भर होना चाहते हैं तो जाइए। Who will stop you? कौन आपको रोक पाएगा? Okay, any last thing? कोई आखिरी चीज? We're good? हम ठीक है? Something? कुछ? Are you convinced yet? क्या आप आश्वस्त हैं अब? How about your sister? कैसा आपकी बहन है? She what? She has question? उनकी कोई सवाल? Gurudev, I have one thing to ask. She says, I have one thing to ask. Only one thing? सिर्फ एक ही चीज है। Before she had 1,000 questions, now she only has one question. That's progress. पहले उनके बहुत सारे संदेह सवाल थे, अब उनके पास एक ही है। ये प्रगति हो रही है। Hare Krishna, Shri Gurudev, like I already told you, I already did so many anarthas. So while I am practicing this bhakti life, so what is the thing I have to be aware of? Like what should I have to avoid while I am practicing this Krishna consciousness? Maya. She is everywhere. Asat Sangha Tyaga. तो माता जी पूछ रही हैं कि अब जब मैं भक्ति करने का प्रयास करूँगा, मैंने बहुत सारे अनर्थ देखी है, तो अब मैं जब इसका प्रयास करूँ मुझे किन चीज़ों के प्रति सावधान होना चाहिए, क्या चीज़ों को त्याग करना चाहिए? गुरुदेव ने उत्तर दिया, माया को त्याग करो, असत्संग का त्याग करो। In all her variety of forms. और उनके जितने भी अलग अलग रूप हैं उन सबका त्याग करो। Grossly and subtly. सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से। That's best thing. ये सबसे श्रेष्ठ है। Associate with Sadhu Guru Vaishnavas. साधु गुरु वैष्णव के साथ संग कीजिए। Hear absolute truth according to Guru Saran Shastra. परम सत्य को सुनिए, गुरु साधु शास्त्र के Purify आधार पर consciousness. अपनी चेतना को शुद्ध कीजिए। Recalibrate your intelligence and faith पुनः स्थापित कीजिए अपनी श्रद्धा और बुद्धि को from a transcendental perspective, दिव्य स्तर से, not from bodily, mental, sentimental, speculative level. शरीर के, मन के, मनोधर्म के स्तर से नहीं। Base it on science, not on theoretical research work. विज्ञान के उसको आधारित कीजिए, अपने मानसिक खोजबीन के आधार पे नहीं। And chant Hare Krishna Mahamantra. और हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। Chanting is very important because that's where you can see what are you really thinking about. जप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ आप देख सकते हैं कि आप असल में Are आपने you क्या really विचार है। thinking about Krishna? कि आप असल में कृष्ण के बारे में सोच रहे Are हैं। you really trying to convince Krishna you want to surrender to him and have faith in him? कि आप असल में कृष्ण को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको शरणागत करना चाहते हैं, उनको श्रद्धा प्राप्त करना चाहते हैं, Or are we just mechanically chanting, या पर बस मशीन की तरह and चल speculating, मनोधर्म कर रहे हैं, and plan making? योजना बना रहे हैं, What type of chanting? किस तरह का जप कर रहे हैं? That's a good time to see, okay, how close am I to being convinced and convincing Krishna? ये बहुत अच्छा समय है देखने के लिए मैं कितना नजदीक हूँ कृष्ण को आश्वस्त करने के लिए और स्वयं को आश्वस्त करने के लिए। And we can see that every day. और ये हम हर दिन देख We सकते can हैं। do that experiment every day. हम ये हर दिन ये इस तरह का कार्य कर सकते हैं।
And when we do it properly, Krishna immediately reciprocates with us by his causeless mercy. अगर हम इसको सही तरीके से करेंगे तो कृष्ण तुरंत ही अपनी अहेतु की कृपा हमें दिखाएंगे। And Krishna says, if you want to forget me, I'll make you forget me. और कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझे भूलना चाहते हैं मैं आपको मुझे Then भूलवाऊंगा। we'll just be lost in our mind and mental speculation, तो फिर हम भटक जाएंगे अपने मन में अपने मनोधर्म में, concocting and manufacturing something to think and something to do. बस बनावट करते रहेंगे, निर्माण करते रहेंगे कुछ चीज़ के बारे में सोचने के लिए, कुछ चीज़ को बनाने के लिए, But it will not give the desired result. लेकिन उससे हमें वांछित फल प्राप्त नहीं होंगे। We're made to be social. हम सामाजिक होने के लिए बने हैं। So if we associate with Krishna's devotees and talk about Krishna, this is best case scenario. अगर हम कृष्ण के भक्त के साथ संग करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो ये सबसे श्रेष्ठ हमारे पास The more मौका we है। can fill up our time and energy doing that in association, that's the best. जितना हम अपना समय और ऊर्जा ऐसे संग में लगाएंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। Otherwise, everything else is something seriously less. वरना उसके अलावा कोई भी अन्य चीज़ें में गंभीरता की कमी Sat, है। asat. सत और असत, And our association determines our desires. और हमारा संग हमारी इच्छा को आधार निर्भर करता है। Everything is based on desire. सभी कुछ हमारी इच्छा पे आधारित है। If we want to avoid material desire, we have to avoid materialistic association. अगर हम भौतिक इच्छा को त्याग करना चाहते हैं तो हमें भौतिक संग का त्याग करना होगा। And we must seek and become greedy for satsanga, sadhusanga. और हमें से ढूंढना होगा, लोभी बनना होगा सत्संग के लिए, साधु संग के लिए। That is the solution. ये समाधान है। Otherwise, how will we be attracted and attached to Krishna consciousness? वरना कैसे हम आकर्षित होंगे, आसक्त होंगे कृष्ण भावनामृत की तरफ। Maya will give you nice information how to surrender and serve Krishna. माया आपको सही जानकारी देगी कैसे कृष्ण को शरणागत और उनकी सेवा कर सकते हैं। Opposite. उल्टा है ये। Okay? ठीक है। Thank you everyone very much. Appreciate धन्यवाद it. सभी का, बहुत सराहना करता Shishi हूँ। Gauritai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudev ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Pramananda. He's called this Murali Krishna Swami. Jagannath Mahaprasad ki, Akadashi Vrata ki. Did I talk too long? Not so bad? उतना बुरा नहीं था। I hope you'll stay for prasadam. उम्मीद है आप प्रसाद के लिए रहेंगे। They are staying with us. Huh? They are staying with Oh, us. good. Vaikuntha Murthy was supposed to come, but he had seva, he couldn't come. So you're representing your brother, I think, huh? Very good. Are you older or younger? He is older. Older. Oh. Now we got the older brother instead of the younger brother. Hare Krishna.